ड्रॉप बाय ड्रॉप क्वेश्चन बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों के पुश करते करते आप सबने अपने आंसर सबमिट कर दिए, अपना होमवर्क कर लिया. That's very very good. So people who did that, अच्छा बुरा, good bad early, whatever you did. So I'm glad that you did work on your diagrams, है ना. जल्दी से बताइए काम करके कैसा लगा. GC Leong, ये बुक पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है, and we are doing well in this. Are we becoming confident in GC Leong or not? Isn't this chapter the only chapter which is the painful one, the 6 to 10? Good morning sir, I was not able to continue classes. कोई क्लास नहीं कर पाया, ये कैसे. So Polemy says I was not able to continue classes due to my health issues. I hope Polemy your health is better. I have started the recording classes, and the homework which were given from today. I am starting live classes, feeling better. So Polemy, welcome, and I'm sure the more you participate in the classes, the more you'll feel better. I'll do the rest by the week. Sir, I want you to know I did not break my integrity. Thank you, sir, for your encouragement and support. So everyone, this is Polemy. Because of her health was not able to continue. Polemy, I think the name is a feminine name. So I'm saying her. If I'm wrong, please correct me. So everyone, there will be times that you will have such emergencies coming in. Emergencies may you will fail, you will not be able to meet your targets. Please do not hide that. Yes. So Polemy, congratulations. You kept your integrity. So Polemy ने काफी कुछ cover कर लिया है. She has covered a lot, and a lot still remains. Please do that. Moment you announce this to your teacher, to yourself, to the people who are around you, that by in कारणों से, for these reasons I missed, and now I'm making up. That gives you a lot of power, and that shows a lot of strength of your character. So Polemy, very proud of you, बच्चे. करते रहो, and the support is there, and all others. किसी भी वजह से नहीं कर पाया, that's okay. We are human beings, no. But don't let your integrity go down, because once your confidence goes down, once you start feeling यार मैं कर नहीं रहा हूँ या मैं छोड़ रही हूँ बीच में कुछ चीजें, and the gaps are there, those gaps will not let you go ahead. Dushyant, how are you, sir? I'm good, sir. I sent my diagram book on your account. Yes, I got it, sir. Sneha saying my exams are also coming. Oh, perfect, yaar. Okay, perfect. It's absolutely okay. It's absolutely okay. Everyone who's here. So I have a Challenger Group 5 students working with me. So I wanted to talk to them. How's their preparation? Almost every 10 days I talk to them. So then again, one of the challengers wrote to me. She said, "Sir, my daughter's admission. So till 23rd I cannot be available. मुझे स्कूल के लिए जाना है." I said, "Don't worry. My life also continues or not. अभी होली थी, होली में बहुत से लोग, maybe you met some people later on. So बहुत समय के बाद मिले. You should be there. That's absolutely okay. It's absolutely okay. But जो आपके targets हैं, फिर अपना time table वो कर लीजिए. Sir, this preparation, can I get JRF qualified? Deepti, Deepti, this syllabus which you are going to cover is more than enough for JRF. Whether you will qualify JRF or not, that will depend on your integrity. But yes, content-wise, guarantee पूरा मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम पास करना और एग्जाम के लिए मटेरियल होना two different things. Yes, no? There is raw material in your kitchen. Is it a guarantee that food will be cooked? Having raw material in the kitchen, is it a guarantee that food will be cooked? So now you're saying, sir, ये JRF clear करना चाहते हैं कोर्स, उसके लिए बिल्कुल वो कर देगा. The course is here. It will help you clear UPSC, CSE, state PCS, NET JRF. Even entrance examination, say for example, when I joined JNU, I had to give my entrance examination, and I had prepared for my geography optional that year. So I think I was amongst those top 10 ranks because of that. But I really want to tell you, everyone, please understand what I am doing with you. एक थोड़ा सा catch है यहाँ पर दीप्ति में, क्योंकि because she's asked and I want to bring it to everyone. What I am doing is keeping mains in mind, and mains questions are essay type, whereas in NET JRF, in entrance examinations, there is one component which is multiple choice type. So it will take a practice. So I don't want my students to be overconfident. Yes. So you will have sufficient things to clear the examination, know the game. Main examination is like a test match for which I'm preparing you. But when it comes to multiple choice questions, remember they are like 20 over match. वहाँ ball पे hit करना आना चाहिए. You should be able to step on the accelerator, take the run rate high. Run rate high ले जाना है, low ले जाना है, बहुत सारे challenges होते हैं. So that is there. So I hope you got my message to everyone. सर नेट JRF क्लियर करने के बाद क्या होता है? प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग JRF एग्जामिनेशन. खुशी कुछ नहीं होता है, एक ईगो बूस्ट मिलता है कि मैंने नेट JRF कर लिया है, ठीक है? यू बिकम एलिजिबल फॉर सर्टेन एग्जाम्स और सर्टेन कोर्सेज. से फॉर एग्जांपल आपको आगे जो है PhD करना है, एमफिल में एडमिशन लेना है, सो यू गेट एक्सेस के लिए वो आपका स्कोर मांगते हैं. कुछ जगह पर दैट स्कोर गिव्स यू एन एडवांटेज वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचर आल्सो. यस, समवेयर दैट इज दैट. तो यूं समझ लीजिए एक तरह का आपके पास एक टैग हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन यू डन दैट. अच्छा, नेट JRF के बाद द गवर्नमेंट ऑल्सो, इफ यू गो इनटू जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इफ यू गो इनटू PhD, द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स गिविंग यू स्कॉलरशिप. ठीक है, तो ये नेट JRF से जुड़े हुए हैं, उससे अटैच नहीं होना है. आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, डू नॉट थिंक चलो कुछ नहीं से कुछ मिलेगा. लेट अस फोकस ऑन जो हमें चाहिए. गेट दैट? यस और नो? इन कॉन्फिडेंस आफ्टर द डायग्राम बुक, फर्स्ट आई रेड 2 times GC Leong एंड देन डिड द होमवर्क. मेगा ये शायद आप ही का होमवर्क है. वेल डन. BM sir, I just joined the course and completed orientation and started with geomorphology. I will complete the rest. Perfect BM, you are on right on the track. एकदम ठीक जा रहे हो. So geological structure has a more dominant control on landforms and reflect on them. Discuss. Question is looking easy now. Okay, Dhananjay कोई question पढ़ा, and thank you Dhananjay for sharing that. Geological structure has a more dominant control on landforms and reflected on them.
So देखिए landforms, remember two processes, exogenetic and endogenetic. Yes. So geological structure is the inherent strength of the rock or weakness of the rock. The structuring तो उसमें काफी control होता है. But Dhananjay, I would simply say now we have a lot of content on this. जब आंसर लिखेंगे, I will see कि कैसा लिखते हैं. But I'm glad that you were able to see कि हाँ ये आंसर है और हम कर सकते हैं. Very good. So good that you're looking at the questions also. All students over here. Perfect. चलिए तो शुरू करें आज की यात्रा. कितना स्कोर टारगेट है अपना? 300. अब सब लोग बोलेंगे यार ये टीचर 300 बोलता है, 300 तो एग्जाम में आते भी नहीं एंड ये झूठ बोलता है. देखो भाई झूठ तो मुझे पता नहीं. The fact is that people aim for stars. They never reach the stars, but they aim for the stars because stars are the guiding light. अगर मैं यहीं पर होने लगूं यार आजकल जो है 200 तक ही दे रहा है तो 200 को ही टारगेट करते हैं. ट्रू. तो एक स्टूडेंट कहीं पे लिख रहा है नो सम टेलीग्राम चैनल, अरे ज्योग्राफी इज वेरी इजी, लास्ट टाइम आई डिडंट इवन प्रिपेयर, आई गॉट 220. इस बार देखो सुनो, प्रिपेयर और नॉट प्रिपेयर, 220 इज अ वेरी पुअर स्कोर. 220 दे देता है कोई दिक्कत नहीं है. बात आएगी 300 की तरफ जाने में. दैट इज वेयर द इलास्टिक कैचेस. So I want to tell you, many of the students who work in the master stroke program, they have got the interview calls, and I'm looking forward to you also. So 300 plus target है, ठीक है. मोदी जी कितना $5 trillion इकोनॉमी करेंगे? टारगेट तो है, करेंगे नहीं करेंगे देखते हैं. आपके और मेरे बिना तो होने नहीं वाली है ना. अगर आप सिर्फ इधर ही बैठे रहे और आईएएस पास नहीं करेंगे दिक्कत है. So thank you for this. पहली चीज, first thing जो आपने किया होगा डायग्राम बुक में, drawing diagram helps you understand better. Yes or no? Understand better. When you are drawing diagram of the phenomena, be it the U-shaped valley, V-shaped valley, the crevasses, the stepping plane, yes, that is that. Second is it forces you into a vocabulary. Vocabulary memory हो जाती है आपकी. Just telling you, you know, like sometimes it so happens that many people are, यार ये तो बने हुए, देखो ना सबने दे दिया है, ग्रुप में डाल दिया है, and I will use the PDF. What is the problem? ठीक है. Third, I want to give you visual and muscle memory. पहले बना भी नहीं होगा. Many of you just made very rough sketches. And do you see the advantage of working on the group? अब टीचर हर एक को फीडबैक दे, उसकी जगह आप देखकर एकदम से क्लियर कह सकते हैं कि mine is not up to the mark. Okay, this one is up to the mark. Okay, I can, I have a better sample. Let me upgrade it to this level. Oh, I could have. See, if I just say, okay, good, okay, fair, average, no, you can improve. You don't know. इधर तो benchmarking हो रही. There is a very clear benchmarking. And then one day, we started on Friday मन नहीं कर रहा यार. Saturday you saw 2 people submitted, and then you thought मुझे भी करना है, ठीक है. Saturday evening you saw 2 more submitting, and you said, yeah, तो मैं भी कर सकता हूँ. This is looking good. Even I can do it. Sunday you saw more people, and then you said, yeah, I have to do it. Why not gain that confidence? And then you submitted. Many people submitted till morning. True or not? I am saying everyone, please understand. Please understand why is this group created? Because I always believe that collaboration is a bigger value than competition. Hear that? You can compete with 1, you can compete with 2, you can compete with 3, you can win 1 war, 2 battles. Yes. Life is a constant journey. Collaboration makes it joyous. Collaboration gives you the confidence when you are low. So that is why this group is. आप अपने ही ग्रुप में आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट ग्रुप में this girl who has got an interview call, okay, she was वो पहले कोचिंग कर चुकी थी, दिल्ली में ऑफलाइन सब जगह कर चुकी थी, and joined an academy, and then because of me she was looking at my classes and she was learning a lot, and she got an interview call also. So she thanked one of the students from the batch, previous batch. She said, sir उसका काम बहुत इंस्पायरिंग था. Though I am a silent spectator, sir, मैं बहुत ज्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेंस भी देना था, but that person's submissions were so marvelous, sir. उनको देखकर लगता था कि मैं भी अपने में लेकर आती हूँ, and because I was giving mains, I really included them. I want to thank that person. Can you please thank that person on my behalf? अब सोचिए what the group stands for. ये ग्रुप इसलिए नहीं होते हैं कि मार्केटिंग करनी है, ये वो ग्रुप is to inform you in right time, this thing is coming, that thing is coming, and also you being able to push each other. Yes or no? आप बताइए स्कूल में कितने दुश्मन याद हैं और कितने दोस्त याद हैं? दुश्मन कम ही होंगे यार, वो भी छोड़ दिए हमने. Yes or no? But whatever we created in our school and college was because of the people who stood with us. And I'm saying when people come for UPSC, they need that support more. और वो मिस हो जाता है. तो थर्ड हमारा विजुअल और मसल मेमोरी होता है, और फोर्थ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फोर्थ यहाँ पर when you are looking at this, you can relate text and illustrations. और आपके दिमाग में आता है कि यार ये अगर क्वेश्चन आया तो मैं ये बना पाऊंगा. And fifth is that sense of completion of learning. इसलिए काम कराया था. I hope you've done that. All the smart students जो serious हैं about this examination have taken on this challenge of getting 300 plus would be doing this. So I expect कि आप यही करिए, ठीक है. So ये मेगा का है, तो मेगा को हम बेंचमार्किंग के लिए यूज करें. Everyone देखिए जो फिगर से उठाया है वही है, उन्होंने वही लिया हुआ है, तो I don't want anyone to go any further. इतना ठीक है. टेम्परेट लैटिट्यूड, फ्रॉस्ट इज पोटेंट, दिस थिंग. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
मेगा कह रहे हैं कि मेगा चरमक है, ठीक है. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट मेनी ऑफ यू आर नॉट इन लाइव क्लास, यू आर इन रिकॉर्डिंग एंड स्टिल यू आर सबमिटिंग. गुड एवरीवन, वेदर यू आर इन लाइव और रिकॉर्डिंग, इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ दिस कोर्स, माय कोर्स, यू नो समबडी सेड अरे मेरा कोर्स तो वीडियो जो है वहां पर चला गया, क्या लीक हो गया सारा, अब कोई भी मेरा वीडियो देख सकता है. यार टीचर का ज्ञान मतलब भंडार है यार. एंड किसने कहा कि टीचिंग इज ओनली अबाउट डिक्टेटिंग और अबाउट यू नो सम पॉइंट्स, वो पॉइंट्स तो बुक में लिखे हैं यार. टीचिंग इज क्रिएटिंग दैट लर्निंग एटमॉस्फेयर वेयर द स्टूडेंट विल ग्रो. वो थोड़ी ना यार रिकॉर्ड हो सकता है. ये सुनो, एवरी ईयर इट चेंजेस, एवरी ईयर में तो लेक्चर ही बदल जाते हैं. आधी टेंशन तो मुझे ये रहती है कि इस साल क्या पढ़ा है, पिछले साल क्या पढ़ा है. क्या बात कर रहे हो सर, एग्जैक्टली. सो आई लुक एट द एग्जाम्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे एवरी टाइम, ठीक है. अब ये जैसे रूट पेनिट्रेशन, अब एग्जाम में मैं इतना सारा नहीं कर पाऊंगा. अभी बहुत से लोग सोच रहे हैं कि ये एग्जाम में कैसे होगा. यू नो एग्जाम में क्या होने वाला है, एग्जाम में प्रोबेबली मैं सिर्फ इतना बनाने वाला हूं. दिस मच इज आल्सो पॉसिबल. सॉइल इरोजन है ना, मैं इतना बना दूंगा, काम खत्म. So please get that. When you are making a diagram, do not think that you will draw the whole of the diagram. Some of many people are there कि भाई उनके पास तो हम तो यहाँ से देख रहे हैं और हम लोग जो है सबसे स्मार्ट है, सबसे तेज आज तक चैनल है, हम सबके मैप लेकर उधर जाके बना देंगे. ऐसा नहीं होगा यार. Your visual muscle memory has to be created over here. So use this part. Some people say अरे ये तो एग्जाम में बनते नहीं, तो बहुत मुश्किल है. अरे देखो यार, अंगूर खट्टे हैं, उनके लिए हमेशा अंगूर खट्टे रहने वाले. True or not? I am saying people who have done that. बहुत से लोगों ने अच्छा बुरा जैसा भी किया. अभी बेडिंग प्लेन जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पता है द टॉपिक इज कॉल्ड, यहाँ तो देखिए लैंडस्लाइड में पढ़ा है. आई वांट टू टेल यू, लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप, ये आएगा मास मूवमेंट में. मास मूवमेंट, एवरीवन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज कंपाइलेशन फॉर मास मूवमेंट. मैं आज इसे यूज करूंगा. आई विल शो यू हाउ टू यूज इट. एंड इतना इसके ऊपर कुछ नहीं करना. एवरीवन, आई गारंटी यू, यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन मोर देन 200 वर्ड्स ऑन दिस. टेल मी 200 वर्ड्स के लिए 1 2 diagrams and 1 flow chart is more than enough or not? 2 diagrams, 1 flow chart. What is the source? This here. Mass movement के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा. Nothing at all. Done. Final. और कुछ नहीं करना. सर उसमें सविंदर सिंह में और दिया, बहुत कुछ देने दो उधर. In that 20 mark question or a 15 mark question, I will not have scope for this. इतना कर दिया बहुत है. So please have belief in what you have done. ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है. This is about wells, ground water अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. So 2 diagrams हो गए, perfect on that. यहाँ पर किसी ने कहा स्ट्रक्चर का, ये मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, रोल ऑफ स्ट्रक्चर, है ना. धनंजय जो बोल रहे हैं सर मुझे पता चल रहा है रोल ऑफ स्ट्रक्चर. एक बात बताइए एवरीवन, वी वर टॉकिंग अबाउट, अभी हमने बात किया मास फ्लो. डू यू नो व्हाट इज मास मूवमेंट? मास मूवमेंट होता क्या है? मास मूवमेंट इज जो इरोडेड है, व्हाटएवर द सरफेस, व्हाटएवर इरोडेड मटेरियल इज देयर, इट्स मूवमेंट अंडर ग्रेविटी, दैट इज मास मूवमेंट. अब इट कैन बी स्लो क्रीप, इट कैन बी फास्ट फ्लो, यस, इट कैन बी एवलांच, इट कैन बी फॉल, कई तरह से हो सकता है. सौरभ कह रहे हैं ग्रेजुअल मूवमेंट. सौरभ इसलिए ग्रेजुअल वर्ड हटा रहा हूं. आई एम रिमूविंग दैट एडजेक्टिव ग्रेजुअल. इट इज मूवमेंट अंडर ग्रेविटी, बिकॉज़ व्हेन यू से ग्रेजुअल देन इट मींस क्रीप ओनली, बट आई एम सेइंग देयर इज फॉल आल्सो. सो सौरभ, आई एम नॉट सेइंग यू रॉन्ग, बट माय जॉब टू करेक्ट यू. कई बार मैं इवैल्यूएटर होता हूं तो मैं करेक्ट करता हूं, तो बच्चे लड़ने आ जाते हैं, और ऐसे कैसे मुझे गलत बोल दे. हां चौधरी, तुमको नहीं बोल सकते थे, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे भले के लिए किया, ठीक है. सो ग्रेजुअल वर्ड मैंने सौरभ हटा दिया. आई होप यू डोंट माइंड दैट. तो अभी जो मास मूवमेंट है, अभी मास मूवमेंट किससे डिपेंड हो रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, दिस इज अ माउंटेन, this is a mountain, okay, and this has sedimentary formations. This has got sedimentary formations. ये जो layer है ना mountain में, जो rocks हैं, they are arranged in layers. ठीक है, कितने layer हैं? A, B and C. B is the strongest. B is the strongest. ठीक है. Now erosion is happening, everyone. Erosion is happening. So I'm saying A and C are sedimentaries and B is igneous. चलेगा? So now what happens? Erosion happens, and whatever are the sediments, under their own weight and gravity, they are moving down slope. धीरे धीरे ये नीचे नीचे जा रहे हैं. Is everyone okay? और यहाँ से भी टूटता है, it breaks and they keep on. What is this? This is mass movement. Is everyone okay? Everyone okay with this? This is the eastern slope, everyone. This is the eastern slope. This is the western slope. Will the same thing happen? Similar thing happen on the western slope also? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होगा. But it so happened that the western slope, the geological structure is like this. The igneous rocks are not parallel to the surface, rather at an angle. Now tell me, will these rocks act as a barrier to mass movement or not? होगा या नहीं होगा? East and west change हो गया, एकदम change हो गया. Now tell me, ये diagram, the diagram which is shown to you for rapids and cataract, for waterfall, have I smartly used it for mass movement? True or not? Marks कमाइए, दबा के marks कमाइए.
Who's stopping you? मौका मिलेगा. Mass movement पता होना चाहिए. And this thing, and can I say, this is also a diagram for the question which Dhananjay had brought in, that structure exercise a huge control on landforms. Yes. इधर आप देखेंगे स्मूथ फ्लो हो रहा है, पैरेलल बैंड्स में जा रहा है, यहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इज एवरीवन ओके? सो ये सारी चीजें मैंने आपको कहा, आप यू आर वेरी स्मार्टली कलेक्टिंग योर रॉ मटेरियल्स. प्लीज डू दैट. सम ऑफ यू डिड दैट हाफ हार्टेडली. चलो यार सर ने कहा है तो लेट मी डू दैट. और कि सर ने कहा तो मे बी यू नो लाइक ही इज बीन टीचिंग फॉर सो लॉन्ग, सर के पास अपना विजडम है, सर इसलिए बता रहे हैं. एब्सोल्युटली ओके. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी. सम ऑफ यू ऑन द अदर हैंड थॉट कि यार जब करना ही है तो व्हाई नॉट डू इट द बेस्ट. लेट मी लर्न आल्सो. हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है. देखिए बहुत अच्छी चीज इन्होंने की यहाँ पे. नाइग्रा फॉल, विक्टोरिया फॉल, लिविंगस्टन फॉल, योसेमाइट फॉल. इंडिया के दो एग्जांपल, नोआखाली नहीं नोआकिलकाई और दूधसागर जोग फॉल, धुआंधार. तो ये और एडवांटेज हो गया ना आपके लिए. यस, वाटरफॉल्स भी हो गया, इंडिया भी हो गया. वर्ल्ड के एग्जांपल आप कौन से पेपर में देते? पेपर 1 में. इंडिया के एग्जांपल कौन से पेपर में देते? पेपर 2 में. इट इज फॉर यू. मेक सेंस? वुड यू वांट टू लुक फॉर एग्जांपल्स आल्सो व्हेन यू आर ड्राइंग देम? बना दो ना. जहां पे भी सविंद्र सिंह में बहुत सारी चीजें व्हाट सविंद्र सिंह टॉक्स अबाउट, वो लिख देता है कि इट इज फाउंड हियर, इट इज फाउंड हियर. अच्छी बात है, यूज करो यार, क्या दिक्कत है? करना चाहिए कि नहीं? So that is what I am saying. I hope you are understanding, and that is my advice to all of you. So that's good. यहाँ पे चलते हैं. इस पर कितना अच्छा, बहुत से लोग दुखी रहते हैं. इस पर क्या होता है सर? नदी है, नदी काट नहीं पा रही है, तो नदी ऐसे घूम रही. The river is going like this. Yes or no? So river तो अपना V-shaped valley बना रही है, but the mountains are locked into each other. तो ये स्पर हो गया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? Interlocking spurs. True or not? Everyone. If you have read, if you have, अब इसमें ऐड कर रहा हूँ. So what is the spur? ऐसा one is locked into another one, third is locked into fourth, और वो हमें दिख नहीं रहा है, and the river is cut into this. Is everyone okay? So this diagram, two diagrams are there, and some people have issues drawing this. तो ये spur समझ में आ रहा है both, and river must be flowing like this. तो ये थोड़ा सा ऊपर से है, ये थोड़ा सा साइड से, front view. Is everyone okay? The river is emerging over here, front view and slightly tilted. अच्छा, I want to add something to this. If everyone has, you know, because I can see, you know, people have done work on glacial landforms also. Glaciers, you heard, river is making what? V-shaped valleys. Yes, glaciers do not create their own valley. In fact, glaciers develop on the valley of the river. So river valley में क्या होगा? यहाँ पर ice आ जाएगी. What will happen? Ice will be added. Now this whole area get iced up. Sir क्यों होगा ice? अरे ice age आ गई ना. You can imagine बीच में Pleistocene ice age, remember? The whole planet's temperature had got down. अब ये हो गया. More ice comes, everyone, more ice comes. अब और आगे इस लेवल तक ice आ गई. So this whole area is now iced up. See how one diagram can give us a lot of power for other diagram. Now what ice does is ice cuts this like this. Ice अपना erosion करती है. ठीक है? Ice will do on its own. उसके बाद पता क्या हो जाएगा? What will be the next diagram? Next diagram would be, अगर मैं इसी diagram को बना रहा हूँ, if I make this diagram only, ये तो ऐसे ही रहा. This remains like this only. But the spurs which were there, now those spurs are cut vertically. Those spurs have got cut vertically, and this side also, the spurs which were there, what happened to those spurs? They got cut like this. अब बीच में क्या है? बीच में पानी है. There is water which is flowing. Do we get that? और ये क्या बन गया? U-shaped valley. Is everyone okay? So the spurs were cut. So how would I show them? Like now in this vertical diagram, I will show them like this. This spur got cut. This spur got cut. The other spur which was there, that also got cut. And this spur which was here, this also got cut. ठीक है? तो ये spurs तो कट गए हैं. किसने who has done that? The glaciers have done that. ऐसे स्पर्स को क्या बोलते हैं? ट्रूंकेटेड स्पर्स. ये कौन से थे? इंटरलॉकिंग स्पर्स. यस और नो? Interlocking spurs which were into each other, the river turned into glacier and cut them, and vertical walls were created, or that is it. So if you have learned that diagram, you know this diagram also. True. थोड़ा सा वो 3D विजुअलाइजेशन चाहिए. ठीक है? अब एक और चीज बताना चाहता हूँ. इसमें एक एरर ये है कि ये meander कहाँ पर होता है? Meander happens in the middle course of the river when it is in the plains. And interlocking spurs happen where? In the upper course of the river when it is in the highlands. True or not? ये भी थोड़ा सा समझना है. ऊपर का नीचे का कौन सा है? So that's also there. If you are able to understand, वो मेरा आज का काम है. Today's lecture is on that also, so I'm going to explain that.
बट स्टूडेंट्स हु हैव टेकन दिस एडवांटेज, वो वोकैबुलरी का एडवांटेज ले चुके हैं कि हाँ यार ये समझ में आ रहा है मुझे एंड इट इज गोइंग, परफेक्ट, लेट इट गो। ट्रू। चलिए, यहाँ पे मियांडरिंग था, ये मियांडर यहाँ से शुरू हुआ, दिस इज द sectional diagram of a meander and this is the top view. I'm sure you have seen that oxbow भी हो गया, banana भी आ गया, and then can you see very important thing जो मैं आपको बता रहा हूँ, Mississippi में known as this thing, the names which are there, that is there, ठीक है। cover the lake, Asia's largest freshwater oxbow lake, can we do that? ये हमारा collection है, we are doing that, it will work for us, ठीक है। ये erosion है, ये मैं फिर बाद में करने वाला हूँ, but good work मेगा, very very good work, you kept the important things in mind, and anyone who's not getting this in GC Leong, where you can get it from? Savindra Singh also, and remember Savindra Singh's voluminous chapters have been reduced to this much. यही diagram use करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। Do we get that? So very inspiring and good work. तो मैंने सभी को दिखा दिया, and all of you have done good work. It's just that showing what are the qualities of this work that will make very very clear. अब यहाँ पर हमें differentiation between Bergschrund and crevasse आना चाहिए, ठीक है। Bergschrund बहुत deep होता है, it is very very deep. And why is it created? It is created when the snowfall is less than the snow melt. ठीक है। सो द ग्लेशियर इज क्रीपिंग अवे, ये सुनो, ग्लेशियर क्रीप कर रहा है, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ये सुनो, बट इट इज गेटिंग सेवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस वैली एंड द स्नो इज नॉट एबल टू फिल अप, तो बहुत बड़ा एक गैप बन जाता है, दैट इज व्हाट इज क्रेवासी। ऑन द अदर हैंड, क्रेवासी इज यहाँ पर जब ये आ रहा है तो यहाँ पर एक स्ट्रेस हो रहा है, रिमेंबर, बिकॉज इट इज नॉट स्मूथ सरफेस, सो इट इज लाइक स्ट्रेस, सो एक क्रैक्स बन रहे हैं, दीज आर क्रैक्स बिकॉज ऑफ दैट। वो उसकी इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को देखते हुए जो क्रैक्स बनते हैं, दे आर माइनर वंस, बट बर्गश्रूंड इज अ बिगर वन। डू वी गेट दैट? समझ में? तो ये समझिए, तो छोटा सा ग्लेशियर में ही आइस की वजह से आइस को बेंड करेंगे तो थोड़े से क्रैक्स आ गए, इधर एक्चुअली द आइस इज पार्टिंग अवे फ्रॉम द वैली, वो थोड़ा बहुत आइस जो इधर था और इट वाज नॉट बीइंग मेड अप फॉर दैट, तो ये उस बेंड का वो। देन रिमेंबर हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर, वी नो ऑफ सेडिमेंट्स, वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट सेडिमेंट्स, बट इन द वोकैबुलरी ऑफ ग्लेशियर्स वी हैव द वर्ड्स मोरेन्स। तो मोरेन से परिचित होना पड़ेगा, है ना। मोरेन से क्या बनता है, जहां पर वो इकट्ठे होते हैं, जब वो डिपॉजिट होते हैं तो क्या बनता है, आउटवॉश प्लेन बनता है, ये सुनो, आउटवॉश प्लेन इज देयर, ठीक है। ग्लेशियल टिल्स होते हैं तो टिल प्लेन भी होता है, टिल प्लेन, तो ये फाइनर होता है, टिल प्लेन। अब ये वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं जस्ट, और एक ही डायग्राम बनेगा, डायग्राम यही बनेगा, एंड रेस्ट यू गो ऑन। इज एवरीवन ओके? इन द एग्जामिनेशन में बताऊं क्या नहीं कर पाओगे आप, ये शेडिंग वाला फील नहीं ला पाओगे, शेडिंग इफेक्ट, यू वांट टू बी एबल टू डू दैट। सो सम ऑफ यू माइट से ना, अरे इतना तो एग्जाम में कभी नहीं होता, देखो यार अंगूर कट्टे, या तो करके दिखा दो, नहीं कर सकते तो रोना बंद करो यार। कई लोग ऐसे होते हैं, दे विल ऑलवेज बी क्रिपिंग, एग्जाम में नहीं हो सकता, जो कर सकता है वो तो कर देता, यस नो। सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स ओके व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आपने अपनी तरफ से पूरा टाइम देकर किया तो दैट्स ओके। वहां पे रियल एग्जाम में मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल यही करने वाला हूं, ये मेरी वैली है, यहाँ पे मैं वी शेप वो करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर इस तरह से डॉट्स डालने वाला हूँ। आई नो व्हाट विल हैपन इन द रियल एग्जाम। ये मेरा टंग हो गया ऑफ द ग्लेशियर, जहां पे मैं टर्मिनल मोरेन्स बना दिए मैंने, और टर्मिनल के अलावा जो बीच में होते दो ग्लेशियर्स जब मीट कर जाते हैं, मीडियल मोरेन्स, ठीक है। बस इतने बनाऊंगा मैं एग्जाम में, और इसमें एरो बना दूंगा, दिस इज द डायरेक्शन, एंड यहाँ पर लेबलिंग जरूर करना, द बेस्ट पार्ट इज लेबलिंग व्हिच हैज बीन डन, प्लीज गेट दैट। सो एग्जाम में इतना बनेगा, एग्जाम में इतना बनेगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो वी विल हैव टर्मिनल मोरेन, टीएम, medial moraine, that is there. What are these two glaciers which are meeting, और उनके साइड में क्या होते हैं, LM, lateral moraine। तीन ही लिख रहा हूँ, TM, MM, LM, जॉब डन। जब ये प्लेन यहाँ पर एक्सटेंड करेगा तो पहला प्लेन क्या आएगा, फर्स्ट प्लेन विल बी आउटवॉश प्लेन, और उसके आगे जो फाइन वाला होता है वो क्या कहलाता है, टिल प्लेन, दैट्स इट। ये क्या है, ये डिपोजिशनल है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इरोजनल, ठीक है। हो गया, इतना ही बनाना है, एग्जाम में इतना बनाऊंगा। If I'm able to do that, and how will I do that? I will do that when I'm writing my answer like this, और यहाँ पर ये बना दूंगा। Make sense? That's it. I hope you can understand. And please don't mind me giving time in this. सर तुमने बना लिया, इसमें क्यों और वो करो, इसको एग्जाम में कैसे इंटीग्रेट करना है। I'm looking at 300 plus, so that is why I'm giving that. So it is everyone has put in efforts. I can see that. Why not you learn that how to extract marks in this? ठीक है। ये हमारा पिरामिडल पीक है, एरिड्स क्या होते हैं, सर्फ्स क्या होते हैं, एवरीथिंग डन इन दैट, एंड हाउ ग्लेशियर डज दैट, तो ये भी ठीक है। तो ग्लेशियर जो है ओशन फ्लोर पे करता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें एक चीज लगी, आई वांट टू ऐड टू इट, अगर आपने देखा प्रैक्टिकली यू सीन दैट, तो जो ग्लेशियर की जो वैली होती है, ग्लेशियर का जो वैली होती है, उसमें ऐसा आता है, रिमेंबर, अगर आपने वो देखा हो तो फ्योर्ड्स के डायग्राम में आएगा, ऐसा। सो टुवर्ड्स द सीवर्ड साइड एक शैलो एरिया आता है जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड। वेरी गुड आनंद ने एकदम सही पकड़ा, ये थ्रेशोल्ड आता है, ये सब। तो यहाँ पर जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो लेट्स स्मार्टली, या तो इसी को हम थ्रेशोल्ड बना दें, ये सुनो, इसको ज्यादा भर दो ना, उससे क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड से। देखा, ये सारा मेहनत क्या बेकार हो गया हमारा, नो नो नो। सी जीसी लियोंग इज फॉर स्कूल किड्स, नो, उसने इतना सिखाया, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। कैन यू इनोवेट दैट द सीवर्ड साइड ऑफ अ फ्योर्ड इज शैलो, बिकॉज वो ग्लेशियर तैर के अपने डिपॉजिट्स वहां पर डाल देता है। So if you've done that,
वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इन्हीं उनको इंप्रूव करते रहो। वेरी हैप्पी विद दिस डायग्राम, वेरी वेरी हैप्पी विद दिस डायग्राम। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। बनाने का बहुत आसान तरीका था, पहले ही मजे से यू शेप्ड वैली बना लो, उसके बाद सब सही रहेगा। पहले यू शेप्ड वैली बना लो। और दो चीज का ध्यान रखना है, एक ये बॉटम ऑफ द वैली पे काम हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बॉटम ऑफ द वैली पे काम हो रहा है और ये साइड में भी काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा ये 3D इफेक्ट देने के लिए वी मस्ट बी मेकिंग इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक सर्क, दो सर्क, तीन सर्क, 3 सर्क्स, 4 सर्क्स, व्हाट आर दीज सर्क्स है, यस। और सर्क्स के बीच में क्या होता है, एरिट, एरिट, ट्रू और नॉट। People who have done that, they would understand what I am doing. और इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्क में पानी भरा हुआ है, वो लेक है, ऐसे आता है, वो फ्लो करता है और यहाँ से गिर जाता है। लाइए उसे गिरा दीजिए, जॉब डन। पूरा वैली बन रहा है नहीं बन रहा है। अच्छा, नीचे का एक 3D इफेक्ट और लाना है, तो 3D इफेक्ट में जस्ट गिव इट अ सेंस ऑफ डेप्थ दे दिया। दे ऑल विल फॉल ओवर देयर, व्हेन दे विल फॉल, ये लोग अपना पूल इकट्ठा करेंगे, दे विल क्रिएट अ पूल ओवर देयर, सारा पानी उसी में गिर रहा है ना, एंड दैट पूल विल कम हियर एंड विल फ्लो आउट। बाकी क्या करना है, वो बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी हर एक सर्क के लिए एक माउंटेन दे दो, ठीक है। ये गलत है बच्चे, दिस इज रॉन्ग, दिस नीड नॉट बी अ पिरामिडल पीक। आप तो सिर्फ एक एरिट बना रहे हैं ना, डू यू गेट दैट, मेगा डू यू गेट द एरर ओवर हियर, दिस इज जस्ट एन एरिट, दिस नीड नॉट बी पिरामिडल पीक। तो तब बनेगी ना इसमें ऐसा होगा, तब यहाँ पर एक पिरामिडल पीक बन सकती है। जस्ट ब्रिंगिंग आउट द एरर्स और कुछ नहीं, माय इंटेंशन इज दिस, सबका बन जाएगा 3D या नहीं, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्विकली बनाना आना चाहिए, छोटा बनाना आना चाहिए। अच्छी बात क्या किया इन्होंने, टान लेक, वाटरफॉल, ट्रूनकेटेड स्पर्स, रिमेंबर ये सारे स्पर्स थे, अब वही आके जुड़ गया कि नहीं, पहले दे वर लॉकिंग इनटू ईच अदर, नाउ दे हैव गॉट फ्लैटेंड। अभी जो समझाया वो अपने आप कांसेप्ट आ जाएगा। लैटरल मोरेन्स ऑन द साइड, ग्राउंड मोरेन्स एट द बॉटम, यस, फ्लैटेंड फ्लोर, स्टीप साइडेड वैलीज, एवरीवन ओके। तो अच्छा काम किया है एंड गुड वर्क। ये यहाँ पे डिपोजिशनल है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए क्योंकि पूरा का पूरा इस डायग्राम शुड बी, मेक इट बिग एवरीवन, मेक दिस बिग। क्यों, ये बहुत सारा, ये आपका पूरा का पूरा डिपोजिशनल प्लेन बना रहा है, दिस इज द होल डिपोजिशनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। When we get a question on landforms, one set of them are created by erosion, one set of them are created by deposition. In the examination, you will not make all of them. Deposition का एक हेडिंग देकर पूरा ये बना दो, और इसमें ये जो छोटे छोटे है ना, ड्रमलिन्स हैं, एस्कर्स हैं, मोरेन्स हैं, आउटवॉश प्लेन है, कैटल लेक है, एवरीथिंग दैट इज देयर, एवरीथिंग दैट, बड़ा बनाओ, इसको बड़ा बनाओ, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल फीचर landform. So everyone, I was giving individual comments, फिर उसमें अच्छा बुरा बोलने की जगह I thought it would be better to spend some time, give an exhaustive feedback on one set of diagrams, how to use that in the examination, how to upgrade that. I hope you will appreciate that. और ग्रुप पे नहीं लिखोगे सर मेरा वाला नहीं बताया, मेरा वाला नहीं बताया सर, मैं जान दे रहा हूँ, मत देना जान, ठीक है। So that is that. So ये अच्छा काम किया इन्होंने, अच्छे एग्जांपल्स के साथ किया। I hope you have all those things coming. So I'm ending this, चलेगा। So ये सबको फीडबैक मिल गया है एंड यू कैन सी ऐसा भी बना सकते हो बट अपने हिसाब से। अब देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम जो भी बनाया था, बट दिस इज फॉर विच रीजन, डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में यू विल नॉट सी स्टीप स्लोप्स, यू विल नॉट सी एरिट्स, क्यों, क्योंकि सैंड के पास वो नहीं है ना, ये सुनो, यू विल नॉट सी सो मेनी वाटर फ्लोइंग इनटू दैट। यहाँ पे क्या बन रहा है, बहादा बन रहा है, बजादा जिसको बोलते हैं, और पेडिमेंट प्लेन बन रहा है, उधर आउटवॉश प्लेन बनता है, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। और इतना इजी हो जाएगा हम सबके लिए, पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, पैन प्लेन, अभी आया है 2021 के मेन एग्जामिनेशन में, क्रायोप्लेनेशन, क्रायोप्लेन। पता है ये सब क्या है, व्हाट आर दीस, व्हाट आर दीस, दीज आर नथिंग बट वो जो लास्ट वाला जो डायग्राम बनता है आपका, दीज आर द इरोजनल प्लेन्स लेफ्ट आफ्टर, पूरा जब इरोजन हो जाता है, इरोजन सिर्फ नाम बदल जाएगा, सबके अपने अपने डायग्राम होंगे। पेनी प्लेन इज बिकॉज ऑफ वाटर, पेडी प्लेन इज बिकॉज ऑफ विंड, क्रायोप्लेन इज बिकॉज ऑफ ग्लेशियल एंड पेरीग्लेशियल एक्टिविटी, यस। प्लान प्लेन जो क्रिकमे का कॉन्सेप्ट है, क्रिकमे हैड गिवन दैट this is also a mix of water plus wind. Do we get that? So बहुत सारे वो आएंगे, so I'm glad that you have get something in this, and उसी को लेकर आज की क्लास है। So this is the start of your landform journey. Anyone who's having geography optional, chapter 6 to 10 of GC Leong should be well done, and that is where I would like to upload today's slide. What am I going to teach you? Okay. जो पिछला वाला था, it was, the size was big, the file size was big, so not able to upload it. So everyone quickly have a, this is our lecture number 3. We are still into introduction and basic things only going on. This is what I have for today. Everyone please go through it. Please go through and take a note of the readings also. क्या readings हैं जल्दी से देख लीजिए. Quickly have a look on the readings.
and let us keep growing into this. So today I'll be talking about the concept of a geomorphic cycle. Then we will look at landform classification, how they have been classified, कैसे कैसे landforms होते हैं, ठीक है? Structure of Earth, what is Earth's interior, आज वो भी देखेंगे, and we will also look at geomagnetism. What do we have to do? I'm sure by now you would have done that. Geomorphic process, chapter number 6 from NCERT, class 11th NCERT, part 1. ठीक है? I am sure कुछ वहाँ से भी diagrams उठाए जा सकते हैं, कुछ terms can be taken from there also. You should be doing that. Then geography made simple, landscape development. Now you should start thinking about that. ठीक है? And GC Leon. So 3 books हैं. So people keep on asking me what is the homework. भाई ये पहला काम ये करना ही करना है. In all my lectures you will have specific reading, and I know कि आपने कर लिया है. Chanchila is saying Rupa made simple क्या होती है? तो Rupa made simple Chanchila, that means you have not attended the orientation class. पहली class attend करें please. ये geography made simple ये Rupa publication की है. Get that? So आज ये होने वाला है. Everyone clear on this? Towards the end अगर कोई question हुआ तो we will do that also. Anyone who has joined the class in between, please make sure you see the first lecture, which is the course orientation blueprint. If you think that you can join in anywhere, you will miss on critical inputs. My lectures मैं बहुत ही temperamental teacher हूँ, मन से पढ़ाता हूँ, और हर एक कोर्स के पीछे उसी बैच का फाउंडेशन जुड़ा होता है. सो आई वुड कनेक्ट मेनी थिंग्स टू दैट. हो सकता है दूसरे बैच में मैं कुछ और पढ़ाऊँ, विच अदर वे आई विल हैव दैट. सो इट इज आई ऑल्सो वांट टू एंजॉय माय टीचिंग. आप लोग के लिए तो नया होता है, मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा कि नहीं इफ आई टीच द सेम थिंग एवरी टाइम लाइक अ मशीन. सो एवरी बैच हैज अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच द फाउंडेशन लेक्चर्स. अगर आपने नहीं किए तो साइमल्टेनियसली करते रहें, बट कोर्स ओरिएंटेशन एंड ब्लूप्रिंट जरूर करें. ठीक है? कल्पना, सॉरी फॉर बीइंग लेट. चलिए कल्पना, हमने अभी जो असाइनमेंट था उस पर बात किया है, आज की हम बात करने वाले हैं. एवरीवन, कैन आई से दैट वी हैव मेड अ स्ट्रांग इनरोड्स इनटू द फर्स्ट 3 टॉपिक्स. टुडे इज आवर थर्ड क्लास. नो, आज हम ये भी कर देंगे. आज ये हमारा प्लान है, बट उससे पहले मुझे साइकिल ऑफ इल्यूजन लेकर आना है. सो पीपल हु हैव डन लैंडफॉर्म्स एंड स्पेशली फ्रॉम जीसी लियोंग से आपने नाम भी सुने. What is the biggest problem? What is the biggest problem with that landform chapter if a new person is trying to read it? The names are new, I get that. The vocabulary is one. नए नाम है, तो आपने पहली बार सुने होंगे. बट उसके अलावा क्या है? उसके अलावा other than that, other than the terminology, what else? Okay, Purvi Priyanka are saying visualization. So I would say visualization तो diagram देता है वो. So that is unfair to blame them. Ram is saying less example. Ram, उसने right amount of example दिया. 1 or 2 examples are enough, so I would not take that blame. सौरभ बोला not properly understand, so सौरभ रुक के देखना पड़ेगा ना, उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम से टैली करना पड़ेगा. We'll have to relate. बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये जो है अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉब्लम हो रही है. अंडरस्टैंडिंग. So tell me, डायग्राम खुद से बनाया तो अंडरस्टैंड ज्यादा हुआ है नहीं? Just reading was one thing. When you actually started drawing it, अच्छा ये तो ऐसे हो रहा है, कैसे नो? एक पहले इंटरलॉकिंग स्पर बताया, फिर उसको तोड़ दिया, उसका जो कट वाला फ्लैट फेस है, अच्छा दिस इज टर्नकेटेड वन. यस नो? पिक्चर ड्राइंग एंड वेल इलस्ट्रेटेड बट समराइज्ड. सर जैसे आपने फाउंडेशन में इनिशिएट किया वो हो गया. अच्छा, प्रियंका कह रही है किस काम का है? किस काम का है? ओहो, किस काम का है? ओके, व्हाट यूज इट इज. परफेक्ट. तो प्रियंका, स्कूल में पोएम सिखाया था, पोएम स्टोरीज, व्हाट यूज आर दे? व्हाट यूज आर दे? कांट अंडरस्टैंड इन फर्स्ट रीडिंग. ओके पूर्वी, फर्स्ट रीडिंग तो मैंने आपको हमेशा ही बोला, फर्स्ट रीडिंग तो मतलब आइस ब्रेकिंग. फर्स्ट रीडिंग तो मतलब पहली निगाह में उन्हें देखा, अभी तो समझ आना उनका काफी बाकी है. पहली निगाह में तो इंटरेस्टेड लगे, लेकिन कुछ बोल रहे हैं एग्जाम पास करना है सर इसलिए. एक बात बताओ एवरीवन, योर सब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ. योर स्टडी इज सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज व्हाट ज्योग्राफी स्टडीज, एंड इट इज हाईली वेरिएबल. कैसा दिखता है पूछ रहे हो, किस काम का है? How does the earth surface look? That is what they are saying. How does the earth surface look in areas where rivers are flowing, where ice is there, where wind is there? तो यार अब ये बताओ कि बोलो इसका क्या रोल है सर जीवन में? तो ये आपका सब्जेक्ट है. You are a doctor. You are a doctor and you never see a human being. सर अलग अलग तरह के लोग हैं, 7 billion people. क्यों देखने हैं सर इनको? ना तुम सपने देखो यार. You are a सब्जी seller. You sell vegetables. You haven't seen different types of vegetables. You wondering सारी सब्जियां क्यों देखनी है? भाई तुम ही देखो कि सब्जी तुम्हें बेचनी है, मैंने थोड़ी बोला है तुमको. ये सुनो. So you are an actor. You're working in theater and you are trying to play an act. और उससे पहले उस पे कई नाटक हो चुके, बहुत से लोगों ने किया. Would you want to see them or not? मैं देखना चाहूंगा. क्यों देख रहा है? Because you are an actor यार, इसलिए देख रहा है. लता मंगेशकर sang in so many languages. यार वो गाने वाने बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं. Obviously you are singer, that's why you're doing that यार. पूछ रहे हैं सर ये लैंडफॉर्म क्यों देखने हैं? दूसरा बोला एग्जाम के लिए देखने हैं. ये ज्योग्राफी ऑप्शनल है यार, इसको आना ही चाहिए. वरना मैं तो अभी भी बोल रहा, संस्कृत साहित्य खुला हुआ है. संस्कृत साहित्य में अभिज्ञान शकुंतलम आएगा, फिर रोना.
फिर सभी लोग रो रहे हैं. That's a very funny thing, like why do we have to look at landforms? See, moment a GS fellow comes and cries, sir मुझे landforms क्यों देखने हैं? जा बच्चे जी ले जिंदगी, no problem, छोड़ना, चैप्टर ही छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं. ऑप्शनल का बच्चा, ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा, सर व्हाई डू आई हैव टू लुक एट द सरफेस ऑफ अर्थ सर, एंड व्हाई शुड आई लुक एट लाइक दिस एग्जांपल फ्रॉम विक्टोरिया फॉल एंड लाइक धुआंधार फॉल, ये दो एग्जांपल मुझे क्यों याद करना? तेरा ऑप्शनल है, किसी ने गन पॉइंट पे रख के लिया क्या? यू चोज इट, ट्रू और नॉट? इट इज दैट. शादी से पहले लड़का देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, क्यों? मम्मा पापा बुला रहे हैं, बेटा जरा देखो लड़के देखो. क्यों देखने अलग अलग लैंडफॉर्म्स? भाई एक लैंडफॉर्म के साथ तुम्हें रहना है ना. वन ह्यूमन फॉर्म यू हैव टू लिव नो ऑल द टाइम. You want the mountain or the plateau or the plain, decide. Simple. You are plain and you marry a mountain. Slope ही नहीं मिलता तुम लोग का, करो क्या करना है? सर वो एग्जाम के लिए. Why did you go and look for a match? वो पापा ने बोला था इसे. अभी समझदारी से सोचो ना. You are looking for a partner. You look for mental compatibility, yes, emotional compatibility, physical compatibility. ऐसे तुम ये और वो ये, मजा थोड़ी आएगा. Doesn't make sense. नहीं सर अलग अलग हाइट के लोग हैं दुनिया में, मैं क्यों देखूं सबको? भाई तुम्हारी शादी करने का प्लान है, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? ज्योग्राफी ऑप्शनल, व्हाई वुड दे नॉट लुक एट इट? दे आर सपोज्ड टू लुक एट इट. बोला सर लैंडफॉर्म क्यों देखने? दूसरे के एग्जाम के लिए देखने. भाई लैंडफॉर्म इज अ सब्जेक्ट, डू वी गेट दैट? पूर्वी कह रहे हैं उसी से शादी करना पसंद करते हैं जिसे हम जानते हैं. नहीं जानते वालों से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. जानने वाले जब अपना रूप बदलते हैं तो बुरा लगता है. गेट दैट? बाहर कैफे में बैठ के अलग रूप दिखाते हो आप लोग, कैसे ना? टीचर से बात करते हो तो अलग ही रूप दिखाते हो, ऑल कमिटेड, तोड़ देंगे फोड़ देंगे. एंड देन घर में बैठ के यार ये होमवर्क भी देता है यार, रोज पकाता है. ट्रू और नॉट? सो डेटिंग इज डिफरेंट. तो इसलिए कह रहा हूँ लैंडफॉर्म समझो. बैठकर कहानी सुना रहे मुझे, लैंडफॉर्म क्यों करने? सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक द फर्स्ट चैलेंज इज वोकैबुलरी. ट्रू, नो डाउट अबाउट दैट. सेकंड चैलेंज इज कॉम्प्रिहेंशन, नो डाउट अबाउट दैट. एंड आई वांट टू टेल यू, व्हेन योर टीचर इज गोइंग टू टॉक अबाउट 11 लेक्चर्स ऑन दैट, तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ट्रू, हो जाएगा नहीं? आपको क्रिकेट नहीं आता था, आपने मोहल्ले में जाके खेलना शुरू किया. पहले कुछ नहीं करते थे, आपको साइड में बैठने फील्डिंग मिलती थी. यू वर जस्ट डूइंग फील्डिंग. एक दिन आपको बॉल फेंकने को दे दिया, एक दिन बैट भी दे दिया, बैटिंग कर ली, सीखे कि नहीं सीखे? सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? चलो विशेष वाली दुनिया की सबसे टफ चीज. अबे हो जाएगा, रिवर है, काट रही है, डाउन कटिंग है. सर वो साइड कटिंग नहीं समझ में, साइड भी हो जाएगा, 4 बार देखेगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यू स्टार्ट बिलीविंग ओके द रिवर कैन कट ऑन द साइड्स आल्सो, द बैंक्स कैन आल्सो बी कट. नहीं 11 लेक्चर्स विल बी डूइंग दैट. वुड यू बी विलिंग टू अलाउ दैट टू कम टू यू? आने दो, इट विल कम. And I am to say, this is a hypothetical question. It's a democratic class, so that is why I created a question to all of you. That how do you feel? So many of you who don't feel that way, कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा. But I'm very sure people who have done their diagram work, they are not facing this. हाँ यार, समझ में आने लगा. Their problem is how many. Their problem is how many. Is this enough? ये तो सर easy है, but is this enough? True or not? That is a bigger problem. So real problem तो कोई बात नहीं करता. वो बोला सर समझ नहीं आ रहा. पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा. विषय की वाली न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी है. We're not talking about how to create a nuclear bomb. We're just talking about a simple river cutting. That's not difficult. What is difficult is how many are to be remembered. Is this enough? कितना और है सर? तो सुविंदर सिंह भी पढ़ना है, सब कुछ करना है, समझ तो आता है, बस यही होता है कि हाउ मेनी. एंड फिर उनका रिटेंशन भी, मेमोरी भी. तो अभी तो याद है, थोड़ी देर बाद कार्स्ट टोपोग्राफी एंड कोस्टल टोपोग्राफी सेम लगने लगता है. ठीक है, क्वेश्चन आएगा टोम्बोलो कहां पर होता है. अभी तो पता है कोस्ट पर है, अभी तो पता है कोस्ट पर है. बाद में 4 ऑप्शन उसने दे दिया, कोस्टल, कार्स्ट, एवोलियन, ग्लेशियर. टेंशन में आ गया, भूल जाएगा टोम्बोलो किसका था. ट्रू और नॉट? सो आई एम रियली टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग लाइक सम स्टूपिड थिंग्स. ये समझ नहीं आ रहा सर क्यों करने एंड ऑल दोस थिंग्स. वो तो करने का भाई, और ऑप्शनल अभी भी मौका है, छोड़ दो. अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई, शादी वादी नहीं, बीच में तोड़ सकते हो. अभी तो पहला टॉपिक चल रहा है. मैं तो अभी भी कह रहा हूं जाके पॉलिटिकल साइंस पढ़ो. डिक्टेशन, स्लाइड, मजा ही मजा है. ठीक है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो हाउ डू वी मेक दिस हैपन? सो आई वांट टू टेल यू that if I give you right now 5,000 pebbles, beads, or moti, yes, jewels, if I give it to you right now, अभी मैं आपके हाथ में देता हूँ 5,000. The biggest problem is, sir, how will I carry them? तो बहुत सारे, yes, sir? You will not be happy that I've given you 5,000 precious stones. अबे ले कैसे जाओ? True or not? That's the problem. Now if I give you a thread also with it, or a bag with it, will there be greater joy? हाँ यार मोती मिला है, वरना पहले तो ये होता है कैसे ले जाऊं. True or not? So rather than worrying about how many, won't it be wise to have a thread or bag? Say for example, we are talking about fluvial landforms. Let us put them in 2 bags: depositional and erosional. है ना? Depositional and erosional. Everyone, if I ask you, listen to,
If I ask you, you are a cook. Suppose you say that I'm a cook. I say cook this X international dish. There is some international dish. Abhi banakar dikhao, so that I know you are a cook. And the second one is why cook what you cook the best. Which question is easier? Where can you really get good results? Sir, why? Because that dish you may not even have heard of. Possible or not? यार ये कहाँ से आ गया पता नहीं, इसके बारे में सुना ही नहीं. But ये क्या है? हाँ, जो मुझे आता है उसमें बेस्ट ना, ठीक है. I'll cook Indian, no problem. I'll cook Chinese, no problem. I'll cook this. Yes, sir. I want to tell you, main examination is like why. The question that will come is discuss the coastal landforms. How many से मतलब ही नहीं है. अपने को कितने आते हैं? अपने को 10 आते हैं ना. I'll do only 10. I'll divide 5 as depositional, 5 as erosional. Job done. Look at the exam also. So I'm today looking at giving you something where we can do that. And honestly, everyone who's finding GC Leong difficult, check कर लो. आज जाके फिर से second round में check करो. Has GC Leong for every chapter divided the landforms into 2 sections? पहले erosional देता फिर depositional देता. वो तो bag use कर रहा है. He's so smartly using the bag. So next time when you're making a summary of GC Leong, अभी तक I told you not to make notes, but now you can make notes. So what you can do is from GC Leong make left में erosional, right में depositional. You know the diagrams of it. Suppose you open Savinder Singh adds 2 more. So कहाँ पे डालेगा? Either in depositional, either in erosional. That's all. In the examination, if you don't remember all 10 depositional, you remember 5. Make it happen. Perfect. I am intending to get marks. I am here to take away your fear. Do we get it? So I want to today give you a very special bag for landforms. I want to give you a bag for landforms. So to aapne de diya, depositional erosion. That's one way of looking at it. That is one way of looking at it. Another way which I want to bring you is that when we are studying geomorphology, there are multiple ways in which geomorphology has been studied. एक होता process geomorphology, एक होता structure geomorphology, एक होता time geomorphology. There are many ways in which we can approach things. So I want to tell you that Charles Darwin, you've heard of this name? Charles Darwin wrote his famous book, The Origin of Species. Yes. And theory of evolution, ठीक है? Theory of evolution में how the species originate. Theory of evolution. उन्होंने उसमें दी. And there he gave us this thing, survival of fittest. Nature selects the best. Natural selection. So if you are a student or someone who has never heard these words, I want to tell you that before Charles Darwin, it was a question in mind of many people that how different species originated. How is it that Earth has so much of diversity in life? How is it that even human beings have different, like forms and all that? Different theories were there. Many theories were very mythological theories and all that. Charles Darwin came up with an idea that it is a filter which nature has put on the evolution. Whichever species is able to adapt to the environment better, whichever is not killed by the environment, only that one survives and goes to the next level. So nature is that filter. Nature सारी गलत चीजों को, सारे कमजोर चीजों को हटा देती है. Only the strong will survive. Do we get that? And what is survival then? Survival is evolve in stages to be the fittest. So आप fit हो रहे हैं. Everything is getting fittest. Can I say COVID is a challenge thrown to us? If we are not able to face that challenge, we will be wiped out. Can I say COVID is nature's filter? And millions of people died in that. So millions of people were filtered out by nature. The strong ones survived. Yes or no? So what happens is, if I'm looking at animals, animals have only one option. Either you live or you die. Human beings have more options. Live and die. One is because animals will either adapt or they will fail. Human beings can find cures. Human beings have technology also. Yes or no? So human beings are a different species. That is why we are a stronger species surviving on that. Is everyone okay? So nature selects, and that's that. Can I say this whole idea of nature selects the best has been challenged by human beings because we are able to allow even the weak to survive? True or not? Let us look at an animal. Let us look at an animal, a tiger or a bear. Yes. 3 cubs. भालू है, उसके 3 बच्चे. 3 cubs for a bear. Polar bear ले लेते हैं, ठीक है? 3 cubs and one of the cub is limping. उसका पैर ठीक नहीं है. One of the cub is limping. उसका पैर ठीक नहीं है. Get that? 3 cubs. The mother bear, what will it do? What will the mother bear do? 3 cubs have come. One of them, the leg is not okay. Will it support or not? Will the mother bear support the weak one or not? Everyone is saying mother bear will support because you're thinking like humans. Mother bear will leave it. Mother bear will leave it. The weaker one will be left. Get that? It is humans
where if someone is born with a disease, with a deprivation, yes, we will take extra care of that. हम अपने वीकलिंग को भी संभालते हैं. In nature, the weakling is left क्योंकि वो मर ही जाएगा. जब तक माँ ने बचाना है वो नहीं देखेगी. Get that? पूर्वी saying will use the weaker one for survival by eating it. अब खाएगा नहीं खाएगा उसकी मर्जी यार. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि the nature is that only the survival of the fittest happen. Human beings have altered that. Do we get that? तो ये चार्ल्स डार्विन का आइडिया बहुत से लोगों को पसंद आया. बहुत से लोगों को पसंद आया कि evolution happens in stages. ठीक है? So life forms evolve in stages. Is it everyone? एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. Do you remember चाइल्डहुड में मच्छर को से परेशान होकर क्या क्या मारने के लिए आपने यूज किया? मच्छर मारने के लिए क्या यूज किया घर में, बताइए. मच्छर मारने के लिए क्या यूज किया? चप्पल यूज किया, बताया. चप्पल लेके मच्छर के पीछे पड़ा हुआ है, एक मरेगा, दो मरेगा. केरोसिन यूज किया है, झाड़ू यूज किया है, रैकेट यूज किया. ठीक. तो पहले तो आपने मस्कीटो नेट, मच्छरदानी यूज किया. कैसे ना? शुभम कह रहा है मेरे तो हाथ ही काफी. शुभम मुझे पता है ठाकुर के हाथ नहीं थे, तुम्हारे हाथ हैं और तुम्हारे कानून से भी लंबे हाथ है. शुभम मैं मानता हूँ, कभी तो सोते होगे. ऐसा ना? जब सोएगा तो कौन तुम्हें लोरी सुनाएगा? तो मच्छरदानी में सोते हैं, नहीं सोते? मच्छरदानी में सोते हैं. So have you seen people, if you not used it, have you seen people using mosquito nets? Tropical countries mosquito nets are there. अब वो मस्कीटो नेट में अगर एक मच्छर अंदर घुस जाए तो यू नो दैट फेमस डायलॉग, एक मच्छर आदमी को क्या बना सकता है. और वो जो हाथों का जोर आजमारे, मारते रहो, ढूंढते रहो. उसके बाद क्या आया? उसके बाद एक आया कछुआ छाप. ये सुनो, कॉइल. यू बर्न दैट कॉइल. मच्छर मरेगा नहीं मरेगा, फैमिली विल हैव एजमा एंड यू विल डाई. खांस खांस के तुम मर जाओगे. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मर जाना उधर. ट्रू. उसके बाद वो खतरनाक वाली ओडोमॉस लगाई आपने. वो कहीं पर भी हाथ में लगी रह जाए तो आपको टेस्ट उसका आ ही जाएगा. ये सुनो. सो ओडोमॉस आ गया. फाइनली ये देखते हुए कि शुभम के हाथ काफी नहीं है, अ ब्यूटीफुल लेडी केम और उसने ऐड दिया. वो नाइट गाउन में ऐड में आती हैं, वो कहती हैं गुड नाइट, ये टिकिया लगा डालो, अब चैन से सो, कोई ताली बजाने की जरूरत नहीं. ट्रू और नॉट? सो गुड नाइट. गुड नाइट के बाद हमने देखा ऑल आउट आ गया. ऑल आउट के बाद ऑल आउट एक्स्ट्रा एमएमआर आया, मस्कीटो मोर्टेलिटी. काला वाला हिट आया. हिट लाना है, काला वाला हिट लाना है. आजकल बैट और रैकेट, मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, ये सारे इसी से क्यों नहीं मर गए? हर बार मच्छर अडेप्ट करता जा रहा है. ट्रू और नॉट? अब तो वही ऑल आउट पे ही बैठकर उसको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है. यार फ्लेवर वाली है, कोई और फ्लेवर नहीं तुम्हारे पास. ऑल आउट में सेम फ्लेवर चल रहा है. ट्रू और नॉट? व्हाट इज दिस? दिस इज अडेप्टेशन. पूर्वी कह रहे हैं बहुत कुछ किया, मच्छर नहीं है. मच्छर रहेगा रहेगा, मच्छर रहेगा ही रहेगा, हम निकल जाएंगे. ट्रू और नॉट? So that's what we are talking about. The world is spending so much on मच्छर, फिर भी मलेरिया लोगों को मार रहा है. मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, मच्छर एज अ वेक्टर इज कैरिंग मेनी थिंग्स. ट्रू और नॉट? सो लाइफ फॉर्म्स ऐसे इवॉल्व करते रहते हैं, जो जीत गया वही सिकंदर. ट्रू और नॉट? So that's absolutely okay. That's absolutely okay. अब इसमें क्या हुआ? W.M. डेविस ने ये कॉन्सेप्ट लाइफ फॉर्म्स की जगह लैंड फॉर्म्स पर लगा दिया. He says the landforms which we are seeing billions of landforms अलग-अलग से. जैसे आपने कहा सर कितना याद करेंगे, कोई एंड ही नहीं है. He says landforms are actually stages of evolution. Landforms are actually stages of evolution. एक जगह पर anywhere we are looking at a landform, it is actually in that stage. उस स्टेज पर वो मिलेगा ही मिलेगा. And he says landforms take birth, youth, mature and senile. He says एक predefined sequence है. Sequence है which will be repeated, इसलिए it is a cycle. लाइफ साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म्स. सर वो जो हमने देखे एरीट सर, वो यंग में बनता है. आउटवाश प्लेन कब बनेगा? एंड में बनेगा, तो ओल्ड में बनता है. ये सुनो, दैट्स व्हाट वी टॉक नाउ. वेयर इज मोर इरोजन हैपनिंग? यंग में. यंग में मोर इरोजन है. वेयर इज मोर डिपोजिशन हैपनिंग? सिनाइल. यंग में इट इज कटिंग डाउन, यंग में इट इज कटिंग डाउन, मैच्योर में इट इज कटिंग साइडवेज, एंड सिनाइल में खत्म हो गया. ठीक है? दिस इज कॉल्ड द टाइम अप्रोच. दिस इज कॉल्ड द टाइम अप्रोच. मैंने कहा ना, आपके पास प्रोसेस जियोमॉर्फोलॉजी है, वेदर इट इज फ्लूवियल, वेदर इट इज ग्लेशियल प्रोसेस, ऐसी एक लाइफ साइकिल अप्रोच है दैट इन टाइम दिस लैंडफॉर्म्स आर ग्रोइंग. तो अभी मैंने आपको दो वो दिए थे, एवरीवन इफ यू कैन रिमेंबर, आई गिव यू टू बैग्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. ऑफ व्हाट? ऑफ फ्लूवियल, ऑफ ग्लेशियल, ऑफ कोस्टल, ऑफ karst. Yes or no? Now I am giving you another one. Young landforms or youth stage, mature landforms and senile landforms, and they can be fluvial, glacial, coastal, ebolian. ठीक है? Same thing. ऐसे भी कर सकते हो. So this cycle is called
the cycle of erosion. किसने दिया? W.M. Davis. He says irrespective of the process, whether it is fluvial, eolian, whatever, they are going to go into these stages. ठीक है? और अलग अलग उसमें काम होगा. True. And it will happen once it will go to senile, फिर वापस the cycle will again start. It's like you taking rebirth. So when you're born, you're young, you're mature, and then you're senile. Now tell me, a 40-year-old person, okay, wants to get into civil services of India. Can he get in or not? No. Why not? Age limit, sir. That was possible only in certain age. True or not? Everyone okay? Perfect. So there is no way you can enter. वो cycle है जो पहले घुस गया वही बनेगा जाकर वो. अब बॉडी ने इसमें क्वेश्चन खड़ा कर दिया, सर lateral entry भी तो होती है. Oh, lateral entry होती है. तो can I say W.M. Davis is not completely correct? Can I say with time it has been there? And God, you are saying lateral entry. Has lateral entry always been there? या अभी वो एक reform की तरह से आ रहा है? Is it coming as a reform or not? It is coming as a new reform. And is the existing bureaucracy against it or not? Yes. यार ये क्या है, हम लोग शुरू से घुसे हुए हैं, ये बीच में से घुस रहा है. True or not? So that's what I'm saying. That this idea may not be the best idea, but this idea has become the most popular idea. That all landforms are nothing, but they are on a journey. Some of them are young, some are mature, some are senile, and you can remember that. समझ में आ गया? So the concept is called geomorphic cycle. Geomorphic cycle. This view relates to the sequential development of landform in an orderly fashion, in which the slope also evolves. Slope क्या है? पहले slope क्या होती है? Young में ये, mature में ये, senile में ये. What is happening to the slope angle? What is happening to the slope angle? So decrease होता जा रहा है. So can I say this is also a change in slope? And remember, slope क्या होता है? Degree and direction of slope. किसकी definition है? Degree and direction of slope is the definition of the term called as relief. Gradient. Gradient नहीं है रेहान, वैसे relief है. ठीक है? Gradient is slope only. So can I say that he is saying that whatever is like this today, steep gradient, तो generally flat हो जाएगा. पहले क्या होगा? Flat होगा. Flat rise करेगा. Will rise because of which set of forces? Endogenetic forces. And फिर क्या होगा? वापस आएगा. One cycle completed, again endogenetic forces rise, and then what will happen? Exogenetic forces will bring it down. What are the exogenetic forces? Sir, fluvial. Oh, fluvial. Where will be V-shaped valley? Oh, sir. Where will be waterfall? Either. Where will be meander? Sir, either. And where will be delta? Sir, either. That's it. आपने यही पढ़ा है. Sir, पर कोरी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा. Sir, can go. Yes. U-shaped valley is either. Outwash plain either. That's it. So 3 bags you can remember that. If you want, you can remember that way also. तो सिर्फ इतनी सी हम बात कर रहे हैं. The notion first introduced by American geographer W.M. Davis that a high-level land surface would be eroded until the whole surface was lowered. According to him, each type of regional geological structure could be viewed as evolving under protracted operation of given process. तो कहीं पर भी कोई भी rock है, lithosphere is made up of rocks, no geological structure. Lithosphere is evolving under what? Protracted operation. आधे लोग इसमें डर देंगे. Protracted का मतलब prolonged operation of what? Process. Which process? Fluvial, where rivers are very strong, or eolian, where desert, glacial, where? That's it. अब एक बात बताइए, everyone. If you are able to bring this sentence in your answer, what is a geomorphic cycle? It is a cycle which emphasizes that each type of regional geological structure, which is nothing, lithosphere and landforms, can be viewed as evolving under the protracted operation of given process to produce what? A sequence of stages. क्या है वो? Youth, mature, senile of landform assemblages. Sir, ये क्या होता है? Very difficult English. अबे landform assemblages मतलब landform types, clusters. ये सुनो. अलग-अलग landform बनाता है. Tough English, no doubt about that. But the best part about this sentence is the sentence says a lot in less words. Our problem is we end up writing a lot and say nothing. लिख रहा है. Sir, मैं ये कहना चाहता था. Sir, I was not able to write. I want you to convey this. I'm saying this fellow has conveyed it. अच्छा sentence रख लो. So should I mark so many sentences? अरे यार एक बात बताओ ना. One sentence like this in your answer. On geomorphic cycle. Will it help you as well as the examiner? How? If it comes in the first line, examiner knows that you know. Yes, examiner knows that you know. And for you, how will it help? इसी का expansion करना है. This is an example of summary sentence. आप सारे sentence मत रखो, but अच्छे summary sentences ढूंढ लो. आपकी English भी अच्छी होती है इसमें. And even if it is not there, you learn from it. This is a hint to the examiner that you know. And this, इसके बाद करना क्या? उसके बाद diagrams and छोटा-छोटा लिख दो. That's it. Each stage would possess a suite of landforms. So हर एक stage, can I say each stage is a bag? A suite of landforms. अब ये अंग्रेजी हो रही है. अंग्रेजी क्या? Cluster of landforms appropriate to the characteristic of that stage. True or not? एक बात बताइए. There is a country where the youth population is more than 50%.
there is a country where old age population is more than 50%. Yes or no? Will the goods and services required in the two countries be different or not? Priority में बदल जाएंगे कि नहीं? Yes. So that's what he's saying कि आपके land forms, whatever land forms you have, they will keep on changing. Land forms will keep on changing. That's all they are telling us. Is everyone with me on this? Geomorphic cycle. Davis ने बताया कैसे शुरू होती है. Davis says that river करती है. According to Davis, what is the process? River is the process. Right, sir? But हमने तो पढ़ा wind is the process. Yes or no? Everyone, I'm writing evolution again and again. Why? Remember मेरा काम क्या है? Hammering, so that you become one with that word. डर निकल जाना चाहिए. Sir, हमने तो glacier भी पढ़ा. We read waves also. People who did the homework. True or not? Evolution, glacial waves. True. And we have read और क्या है? Coastal नहीं coastal हो गया. Karst, limestone, solution, periglacial. सब हमने किया सर. भाई आपने किया. Yes. So there are multiple ways of curing. आपने आयुष सुना है? Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy. But you have an allopathy doctor. तो क्या करें? So when he was explaining this, what was he talking about? What landforms is he going to talk about? Fluvial. So Davis created his idea of sequence of events called geomorphic cycle or cycle of erosion, keeping in mind the fluvial processes. Is it okay? Can we say it is incomplete then? He did not think of others. We can keep it that way. Okay. So everyone, I want to remind you, I am not teaching you slope theories. Slope theories will come in advanced geomorphology. Aaj I am bringing geomorphic cycle to you in a simple manner, so that you can use it as bags to put your landforms in. When I have to talk about the theories of Davis, theories of Penck, L.C. King, Wood, all of them will come in advanced geomorphology. As I said, my first 6 classes are to give you that basic understanding. तो उन्होंने कहा river जो होता है ना, he said the cycle begins with, where does the cycle begin? Can I say your cycle began with your birth? Birth of what? Birth of a highland, birth of a mountain. Who creates it? He says certain abrupt endogenetic forces create that. Is everyone okay? So we are trying to understand what was Davis telling us. So Davis said that the story begins with flat land suddenly rising up because of something, some abrupt endogenetic force. The moment it has taken birth, so पहला stage क्या आता है? Infant के बाद आप youth होते हो. So he says rivers will start cutting it, and what will they cut? They will cut V-shaped valleys. Now V signifies deeper more and narrow less. So down cutting is the principal process. What does it do? It cuts down. It does cut one side also, but less on the side. Okay. So this stage he called as youth. During this stage, relief is steepest. What do I mean by relief? अब एक बात बताइए. The thing was, something was flat. This is it. Yes or no? Now what do I do? I start cutting it. Yes. So slope will be this only. Slope will be what? Slope will be this angle. How much is the angle? Approximately, if I ask you. How much does this angle look like? 45 degrees. Okay. ये देखो 75 degrees. कैसे 75? अभी आएगा 75. 45. वो देखो प्रियांशु acute ही रहेगा भाई. चलो 60 मान लिया. 45 to 60. Okay. Now what he says is this will erode further. But the sides of the valley will not expand. Only it is going deeper. Now everyone, compare this angle with that angle. Can we say the angle has become more, can I say steeper हुआ है कि नहीं? So gradient को क्या हुआ? Slope angle को क्या हुआ? Slope angle increases. Starting में slope angle will increase. इस stage को क्या बोलते हैं? Youth. V-shaped valley is a character in case of a glacier, but वो तो glacier की बात नहीं कर रहा. Some of you might be thinking U-shaped valley. नहीं, वो तो सिर्फ river की बात हो रही. Gorges, canyons, and if there is an obstruction, the water will fall. So waterfalls, cataracts, वो सब लिखा उसने. जिसलिए हमने लिखा. So that's it. Now he says, after that, what will happen is, so V-shaped valleys, first stage, relief is steepest. Everyone, can you understand? Steepest and irregular also, because it's changing at many places. But overall, it is there. Achha. Over time, when the river is coming down, mountains with what's the potential energy? It carves wider valley. So that is called maturity. So when will we start calling them mature? Youth के बाद next stage is called mature. Mature में क्या हो रहा है? यहाँ पर characteristic was deepening. इधर characteristic क्या हो रहा है? The valleys which looked like this, now they will widen. Instead of this, now what is happening is, can you see the depth will not be changed now? Widening.
अगर होगा भी तो little compared to the height. Can I say the valley is getting widened more? So how will it finally look like? Finally, it will look like true. Everyone, this is what it was looking here finally. True. Let us compare the angle. This is the angle. Let us compare the angle. What is happening to the relief? What is happening to the relief? Can I say gentle gradient? Some scholars have seen the process of this cycle of erosion as change in slope angle. That is called slope evolution. From steep slope, we are coming to gentle slope, and finally we'll come to zero slope. Steep slope, gentle slope, zero slope. That's the last one. That is the last one. Last को क्या कहते हैं? And then begins to meander, leaving only gently rolling plain. आखिर में क्या रह जाता है? Gently rolling hills, plains रह जाते हैं. Finally, we are left is a flat level plain, lowest elevation possible, cause the base level. जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? आखिर में penny plain कहते हैं. What is penny plain? Almost a plain. Why almost a plain? Well, a plain looks like this. Plain looks like this, a flat plain. But ये वाला जो plain होता है, ये थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है. Can you understand? इसमें थोड़ा सा ऊंचा नीचा, हल्का सा, slight. This is there. So what is it? Penny plain. Ram is saying end product. Ram, हम end product पे जाएंगे ना, सिनाइल है. What happened to the slope? What happened to the slope? अब क्या लग रहा है ये? Now the final product that we are looking at is this is the final product. Do we get that? बीच में क्या हो गया? Isolated hill है. Can I say hill? Slight height over here. Hill. Possible? Elevation क्यों है थोड़ा सा? Can I say resistant हो सकता है? Resistant rock. Remember the structure may be different. बाकी तो सब हो गया. ये किसने किया ये? Someone must be doing it, no? Who's doing this? River has done this. So the river is flowing, and river has. और river क्या कर रही है? Every year what does it do? It floods and puts its deposits. Yes or no? तो ये रिवर का फ्लड प्लेन है और अब तो डेल्टा में आ चुका है. व्हाट इज हाई? ये थोड़ा सा पार्ट है जो रिवर ने अभी नहीं काटा है. विद टाइम द रिवर विल कट दिस आल्सो. ह्यूज मैच्योर सिनाइल. ओके, सो आई एम एन इंजीनियर. आई नो लॉट ऑफ engineering mechanical parts and everything. I know all of that, and what I plan is that because of my knowledge of engineering, I want to start up a spare part business, or probably making chips in India, not aloo wala chips, computer chips, electronic chips in India. I am 20-year-old. I'm willing to take entrepreneurial loan from the government. True. And will I succeed? Is it a guarantee that I will succeed? Not necessarily. Can I fail also? I can fail also. Yes, success, failure, both the things are there. I am a 70-year-old. I get to know that India is facing a chip shortage, and I think, let me do, like computer engineering, and then I will start making chip. Which one is realistic? A young boy in his 20s or an old man in his 70s? Young boy. Old man wants to pass it on, whatever he's learned. He might say that, let me sponsor these young people. Let me be an investor in this. Yes or no? And young people take it on. Can I say, whenever the land mass is there, the earth's surface is there, it is the young stage that takes on that. Isko to hum katenge. We will cut this down to the base level. Young, they want to cut it. Mature, they are cutting it. Sinai, bhai, jo katna tha kat diya, whatever was possible, I have done. I am not working anymore. Does it make sense? Yes or no? अब हर एक के कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म्स है. यहाँ पर मियंडर होता है. एवरीवन यू रिटन मियंडरिंग, नो? इधर मियंडर होता है. उनका यहाँ पे कहना है कि यहाँ पर वाटरफॉल होता है. इधर क्या बनता है? पेनी प्लेन. इफ समथिंग इज रेजिस्टेंट, इरोडेड, इफ दैट इज लेफ्ट, वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं? दिस को उन्होंने कहा, बहुत सारे नाम हैं इसके. इनको नाम दिया जाता है इंसेलबर्ग, मोनेडनॉक. यस, सो अलग अलग चीजें हैं. और यही आपने पढ़ा डेल्टा, आपने पढ़ा रिवर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज. यस नो? सो मेनी थिंग्स. डिड वी रीड और नॉट? Have I given you 3 bags? Landforms can be put under 3 stages. ऐसे रख लेना. You can identify which are the landform of youth, which are the landform of mature, which are the landform of senile. But एक problem है that this geomorphic cycle which Davis is talking about is centered over what? Fluvial processes.
What about Aeolian and glacial? What about Aeolian glacial? Davis said, well, generally landforms are created by water, but there are places where water may not be there. So stages will be there. Stages will be there. Again, the same thing will happen. Youth, mature, senile. Geomorphic cycle will be operating, but that is an exception. What is the rule? Rule is reverse will do, but some places where rivers are not there, your absolute desert. वहाँ पे river की जगह कौन काम करता है? ये काम कर लेते हैं. Everyone with me, comfortable or not? ये geomorphic cycle है. The concept is called geomorphic cycle. मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ. ये देखिए यहाँ पर हमने देखा डीपनिंग हो रही है. इधर क्या हो रही है? वाइडनिंग. रिलीफ क्या हो रहा है? Yes, finally what happened to the relief? खत्म हो गया. ये क्या है? Resistant rocks. ऊपर से कैसा दिखेगा? ये देखिए V shaped valley जैसे cracks हो गए. Mature में क्या किया? They have become deeper. Cracks have become deeper. वो जो flat surface था that has been eaten into. And senile में क्या हुआ? Remember up to this height था. अब इतना ही height रह गया. नीचे का ही रह गया. Can you see only this much is left? ऊपर का top का पूरा layer has been washed off except for some resistant rocks. Can you see that? That's it. पहले the river will go like this. Interlocking spurs. Can you see interlocking spurs? True. बाद में सब स्पर को काट के बराबर फ्लैट कर दिया एंड दिस इज हाउ इट इज. ट्रू एवरीवन. डायग्राम ये भी बना सकते हैं. तो आज आपके लिए प्रैक्टिस क्या हो जाएगा? डू दिस. यहीं से स्लाइड से देखकर बनाओगे. सविन सिंह से बना सकते हो. इन योर डायग्राम बुक व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वन? दिस शुड बी द नेक्स्ट वन. यूथ मैच्योर सिनाइल. No, I'm not teaching you today. I'm not teaching you today. This is the work of Davis. This is the work of Penck, German geomorphologist or geologist, and this is the work of King. And what is this? Sorry, समझ ही नहीं आ रहा. Graphical representation of cycle. What was this? This was a diagrammatic representation. What is this? This is graphical. What happens to your height? Height keeps on, first of all, sudden increase in height. Yes or no? Sudden increase in height. Then gradually what happens to the height? Is it reducing? Is it gradually coming down or not? Height is coming down. What is the angle? Quickly. Steep angle. Less angle. Further less. No angle. Same thing said in multiple ways. आज ये ग्राफ भी प्रैक्टिस कर सकते हो. कर लो. स्टीप टू जेंटल. सर इसमें क्या है? इसमें तो ऐसा ही है. अब इसमें सिर्फ एक चेंज है. ओनली वन चेंज. पेंक और डेविस में क्या चेंज है? ओनली वन चेंज फ्रॉम द ग्राफ. लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट आल्सो. ये जो यहां पर हुआ था ना, हाइट गेन करने वाला, गेन ऑफ हाइट. दिस फेलो सेड दैट द गेन ऑफ हाइट इज अब्रप्ट. दिस फेलो सेज दैट दिस इज जेंटल और स्लो प्रोसेस. रिमेंबर मैंने आपको बताया था डायस्ट्रोफिज्म, नॉट डायस्ट्रोफिज्म, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म एंड कैटाक्लिज्म और कैटास्ट्रोफिज्म. So Davis is of the view catastrophic. Suddenly it will happen. Penck is of the view नहीं भाई suddenly नहीं है. धीरे धीरे उठेगा फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा. Which one is closer to reality? Which one is closer to reality? Sudden or gradual? Well, as a rule, gradual is there. As a rule, gradual is there. But can we say in case of a earthquake, volcano, sudden can also be there? Can I say which case is an exception then? Can I say Davis was actually talking of an exception? Sudden. Yes, but Davis called his work as the real work and बाकी लोग का exception. ये तो मालिक होने का कुछ फर्क होता है ना. फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. सो ही कॉल्स हिज साइकिल एज नॉर्मल साइकिल. अपनी साइकिल को क्या बोलता है? नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन. बाकी सब अब नॉर्मल है. ठीक है. बट वी कैन वेरी वेल क्लियरली से दैट. अमन बोल रहा है अमेरिकन सुप्रीमेसी. ओहो, इस पे तो मिसाइल मारनी पड़ेगी ना अमन डेविस पे. बेटा इसको अमेरिकन सुप्रीमेसी नहीं कहते, इसको जस्ट कहते हैं कि यू नो लाइक पायनियर. जो पहले कह गए. ट्रू और नॉट? अच्छा एक बात बताओ, आपने सुना है जो पहले कंप्यूटर्स होते थे बड़े बड़े कमरे में बनते थे, ह्यूज कैपेसिटर्स एंड ऑल दैट. But with time, computer chips have been brought down in size or not? So can we say American view था, American dominance था, इसलिए जबरदस्ती वो किया? नहीं. With time things have changed. Greater clarity. And can I also say, if those room-size computers were not there, we would have never reached this stage. So can I say if Daviesian idea was not there, other people would not have modified it? उतना तो pioneer को देना पड़ेगा कि नहीं? उतना तो हमें pioneer को देना पड़ेगा. True? That's what I'm saying. So later on Penck came और Davis आए. Davis ने कहा सुनो, मुझे लगता है कि वैसे तो ये ठीक है, सडन हो सकता है, लेकिन जो कटिंग है वो ऐसा नहीं होगा, कटिंग ऐसा होगा. उन्होंने कहा नहीं, कुछ चीजें एक्चुअली हाइट कम नहीं होती है, कुछ चीजें हमेशा उतनी हाई रहती है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया जो बीच का एरिया है वो कम हो जाता है, और आखिर में तो ये बचेंगे ही बचेंगे. इंसेलबर्ग जो हमारे पास आखिर में रहते हैं, इनको वो इंसेलबर्ग नहीं कहता है, वो एक और नाम लेकर आता है, बॉर्नहार्ट. ये सब पढ़ाऊंगा. बट डिड वी गेट द आइडिया? सबका साइकिल ऑफ इरोजन का अलग अलग व्यूज हो सकते हैं. पॉसिबल और नॉट? हमारे देश में दाल बनाते हैं सब लोग, मेक पल्सेस, बट डोंट यू थिंक दैट गुजराती दाल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द दाल कुक्ड इन कोलकाता एंड तमिलनाडु एंड कश्मीर? So the idea is cycle of erosion, but cooked by different people in a different manner. When we are doing advanced geomorphology, we will learn their cooking styles also. But today I wanted you to be familiar with a concept called cycle of erosion, and your landforms which you are doing can be put in those categories, those bags.
सो स्टॉप वरिंग अबाउट कितने लैंडफॉर्म्स हैं, रादर देन दैट थिंक अबाउट हाँ हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं। एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। Perfect. So according to Davis, mountain building is abrupt, but sir, mountain building is an orogenic process which comes under diastrophism. Surajit, you are using all these words diastrophism. When did you learn the word diastrophism? When did you learn the word diastrophism? Were you born with this? Mama, Papa, ever did they talk about it? Did your family, anyone ever talk about diastrophism? Did your family ever talk about mountain building? No, sir. In NCRT, I read it. Yes or no? Did Davis have NCRT? Did Davis have this idea that mountain building actually comes under diastrophism? It is a slow process. Number one. So, as we say, it is easy. Today looking at it, कितना बेवकूफ था तो धीरे धीरे आता है. Second thing, Surajit, I want to ask you, did you hear of that volcano that came in the Pacific Island? Pacific Ocean में भी आया ना island? Yes, Tonga में. How much time did it create to create that island? Abruptly, nobody was aware of that. कितने time में वो island बन गया? And please get that, island is actually a mountain from the base of the ocean, no? If the ocean is 4 kilometer deep, so is it a 4 kilometer high island or not? 4 kilometer the mountain है. How was it created? कितना time लगा उसमें? वो बन गया. Yes, maybe a month or something. Who knows? That was erupting and it's an abrupt one. होने को 2 दिन में बन जाएगा. बन सकता है नहीं बन सकता. So how can you say, sir, I have read in NCRT it is diastrophism? Does NCRT not talk about certain catastrophic processes also are possible? Have they not talked about volcano? Have they not talked about earthquake? Are they not sudden forces? So why would you be so narrow in your interpretation? नहीं सर NCRT में ये लिखा है. ऐसा नहीं है ना. When we have fundamental rights, उसमें नीचे एक लाइन लगी रहती है ना, with reasonable restrictions. Do we have that or not? When you buy an insurance policy or something, do they say terms and conditions apply? तो ऐसा तो मत करो यार. इधर वो कैसे कह सकता है? पहली बात तुमने NCRT से पढ़ा, उसने तो फिर भी ओरिजिनल सोचा था बेचारे ने. Original में he did not think of other things. True or not? Now when he thought of that, people questioned. Then he realized, okay, हाँ वो भी है, हो सकता है. Then now it's his prerogative. How does he explain the others? He said others are exceptions. He says that process can be slow also. That's an exceptional process, but generally होता है कि रात को तुम सोए और सुबह उठे तो देखा अरे हिल स्टेशन, वाह मौसम सही हो गया. तो मर्जी है ना, मतलब मैंने कहा पायनियर होने का ये तो फायदा होता है. कुछ भी कह दिया आपने, गुफा में जो कहना कह दो. बट द फैक्ट लाइज कि गुफा कैसे बनाई आपने, इतने लोग आपकी गुफा में आ गए, दैट इज अ बिग थिंग ना. यार बहुत बड़े बाबा, मेरे बाबा को इस बार मौका मिला था, बाहर निकाला था मैंने कांसीराम ने इनको ना चुनाव के टाइम पे. ऐसा था कि नहीं था? बाबा केम आउट और नॉट? क्या हो एक बार फिर से, मैसेंजर ऑफ गॉड इज आउट, MSG इज आउट, और अब मैं बताऊंगा चुनाव में वोट किसको डालना है. बाबा को पड़ गई झाड़ू. ट्रू और नॉट? तांत्रिक की झाड़ू लगी बाबा को. आई थिंक बाबा वापस चला गया. या एक दो फिल्म बना सकता है बाबा बाहर निकला है तो जो उड़ती हुई बाइक पे बनाता था बाबा, उतने मतलब पूरा सब कुछ डील डॉल के साथ. कैन डू दैट. एंड इफ यू आर अ भक्त ऑफ बाबा, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट वांटेड टू ऑफेंड यू. मुझे लगा कि बाबा के ऊपर चार्जेस हैं और बाबा जेल में है, तो मैं बोल सकता हूँ. कहीं आप बोलो मेरे बाबा के बारे में आपने कैसे बोल दिया, मैं खुद गया हूँ गुफा में, वो बिल्कुल अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, मैं मानता हूँ भाई. ये देखो रात को बना ताजा ताजा. सडनली आइलैंड इमर्ज नियर जापान कोस्ट. पॉसिबल. सो थैंक यू अमन फॉर शेयरिंग. पूर्वी ने अपनी फोटो इधर भेजी है. सर ये बास्केट ऑफ एग के लिए अच्छी फोटो है. बेटा सब अच्छा है, एग्जाम में आना चाहिए. आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. वैसे तो आपने बास्केट ऑफ एग बनाया नहीं, आपने सिर्फ एक ड्रमलिन बनाया है. कैसे बास्केट ऑफ एग है, ये तो बहुत गलत बात है. सभी एक बात बताइए, अगर आप मुझसे कहें सर ये कैसा है सर बास्केट ऑफ एग, हाउ इज दिस बास्केट ऑफ एग? ये तो बास्केट ऑफ एग है ही नहीं, यानी आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया. भाई घर में अंडा का ट्रे होता है, कैसा होता है अंडा का ट्रे? एग का ट्रे में कैसा लगता है? हाउ डज द एग लुक लाइक इन दैट? डज इट लुक लाइक और नॉट? ऐसा होता है ना अंडा. तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी मतलब बहुत सारे ड्रमलिन अगर कहीं पर होंगे तो वैसे दिखाई देंगे. बताओ यार, एक डायग्राम बना के, फोटो से डायग्राम बना के, सर ये बास्केट ऑफ एग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई मैं इतना नहीं नशा करता कि मैं उसको बास्केट ऑफ एग बता दूं. मैं कैसे बता दूंगा उसको? भाई टॉप एंड साइड एक ही का बना हुआ है. पूर्वी इतनी तो यार समझ रखो यार, क्या बात कर रहे हैं यार, बताओ. इसलिए कहते हैं कि भैया पढ़ो कुछ भी, समझने वाले आप ही हो, आपका कुछ नहीं कह सकते. तो पहले तो इन्होंने एक ये बना दिया, एक ये बना दिया ड्रमलिन, और इसको कह रहे हैं बास्केट ऑफ एग है. तो मैं नशे में नहीं हूँ, बास्केट ऑफ एग नहीं है, एक ड्रमलिन है. तो उसके बाद बोला सर ये देखो टॉप व्यू है. सुनो टॉप व्यू नहीं है, कंटूर है, इसी का कंटूर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, अभी भी एक ही है, ये बास्केट ऑफ एग है नहीं. ठीक है. सो डोंट राइट इन कमेंट, वो और दिखाता है आपका ज्ञान. इट शोज कि भाई कुछ समझ नहीं आया. बास्केट ऑफ एग का मतलब बहुत सारे ड्रमलिन एक एरिया में. जरा इंटरनेट खोल लो, आपको बास्केट ऑफ एग डालना होगा, मिल जाएगा. प्लीज यार बोले सर टॉप व्यू से जरा देख लो. टॉप व्यू से क्या हो जाएगा, चीज थोड़ी बदल जाएगी, एक बनाया है आपको तो इसका मतलब ये नहीं पता है क्या? आप ये सोचो भाई इसमें अंडे में अंडा, अंडे में अंडा, ओ ये तो बास्केट लगती है. ऐसा मत करो यार, कुछ तो सोचो. और मैं बता रहा हूँ कि भाई इसकी क्या फोटो देखी नहीं सर, अभी बताओ. वाह शाबाश बच्चे, बहुत मजा आया.
तो इमेजिनेशन है बास्केट ऑफ एग। बहुत सारे ड्रमलिन अगर ऊपर से देखे कोई तो वो लगेगा ऐसे होते हैं बास्केट ऑफ एग। अंडे की ट्रे ऐसी दिखाई देती है, बहुत सारे अंडे दिखाई देते कि नहीं दिखाई। चल मैं ना अंडा नहीं खाता इसलिए मुझे नहीं दिखा। अरे यार तुम्हारे अंदर के छोटा भीम को जगाओ बेटा, बास्केट ऑफ लड्डू देख लो। पब्लिक क्या क्या लेम एक्सक्यूज लेकर आए। और फिर उसके बाद बोलते ज्योग्राफी बहुत टफ है। आप सोचिए, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद ज्योग्राफी। किसी चीज को वर्टिकल दिखाया और उसको अगर टॉप व्यू दिखाना है तो आपकी एटलस में कंटूर सिखाया था ना आपको, फाउंडेशन में ऐसे कंटूर्स बनते हैं, तो बेचारे ने कंटूर बना के दिया। आप उसको कह रहे हो बास्केट ऑफ एग लग रहा है ना सर। नहीं लग रहा है भाई, मुझे नहीं लग पा रहा है। और मैं आपसे चाहता हूँ कि प्लीज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डायग्राम बुक को ये मत सोचो कि दिस इज लाइक स्कूल में जो मैं अपने डायग्राम नहीं बना पाता था और ड्राइंग क्लास चल रही है। डू नॉट मेक फन ऑफ माई एफर्ट्स एट मेकिंग इट इजी फॉर यू। ये मत सोचो दिस इज अ ड्राइंग क्लास। देयर आर मेनी पीपल वो ड्रॉ भी नहीं कर रहे, आधे तो कमेंट्री दे रहे, मैं तो ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं तो वही एग्जाम में करूंगा। मौका नहीं मिलेगा चाचा। विद दिस एटीट्यूड तो पहले मौका नहीं मिला, ठीक है। अगर मिल गया गलती से चाचा बनेगा नहीं वहां पर। यस बना रहे हो ड्रमलिन बन जाएगा ताजमहल। एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, फिर पता है आगे क्या करेगा? यार ये डायग्राम नहीं बना पाया इस टाइम पे, इसलिए मार्क्स कम रहेगा। प्रैक्टिस चाहिए भाई, अभी से कर लो, बाकी तो समझ भी है। चलिए, a genetic analysis and classification of physical landscape can be considered primarily from two types. अब ये लैंडफॉर्म्स को अगर हमें करेक्ट करना, we have to like classify करना। We want to classify। आज मैं कर क्या रहा हूँ, बास्केट्स कर रहा हूँ ना। So they can be classified as process। कौन सी प्रोसेस है? फ्लूवियल प्रोसेस, एवोलियन प्रोसेस हो सकता है। इस प्रोसेस वाली क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक क्लासिफिकेशन। So what you have done, what your GC Leong is doing, what is it doing? Classifying landforms based on the process. What is that called? Genetic classification. Is everyone okay? There can be a classification which is called historical classification, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, that is called derivation chronology। ये आपके सिलेबस में है, एडवांस में सिखाऊंगा। एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी में आई विल टीच यू व्हाट इज derivation chronology। अभी तक आपने कौन सा किया है? जियोफिजिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज इट अबाउट? जियोफिजिकल क्लासिफिकेशन इज अबाउट द बेस्ट जनरल इंट्रोडक्शन वाज गिवन बाय पेंक। रिमेंबर पेंक? तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? उन्होंने क्लासिफाई किया अबाउट एंडो एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। ही क्लासिफाइड on the basis of cause and effect। एनर्जी का सोर्स क्या है वो एडवांस में बताऊंगा। इज एवरीवन ओके? सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लैंडफॉर्म क्लासिफिकेशन। आई हैव सेड देयर आर एक्सोजेनेटिक erosional landforms, the positional landforms, there are young mature senile landforms, there are process based landforms, there are time based landforms। This geomorphology and time stage geomorphology will be talked of again in advanced parts also। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे थे? आज हमने ये किया है अभी तक। Going by this, is everyone okay with this? Landform classification, we've talked about it। Now we're going to the structure of Earth। What is Earth made up of? And how did we get to know about the physical conditions of the Earth's interior? Okay. So I don't know how many of you read NCERT. How can we find out what lies inside the Earth? Tell me 4 possible methods. What lies inside the Earth? 4 possible methods. Everyone, think about it. 4 possible methods. वोल्केनिक सीस्मिक प्लेट टेक्टोनिक। अरे यार ये बड़ा खतरनाक लिख रहा है, प्लेट टेक्टोनिक से अर्थ का इंटीरियर भी बता रहा है। वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंड, माइनिंग। Okay, perfect। Seismic wave, volcano। So when we are talking about Earth's interior, what is inside the Earth? And when we are talking about the Earth's interior, there are some ways which are called direct methods। So I want to know what is inside the Earth। So everyone, I give you a big marble, a football size marble stone। What is inside it? What is inside it? I give you a big football size marble stone, white marble stone। What is inside it? इतना बड़ा मार्बल मैंने आपको बहुत हैवी सा दिया, तो ये लोग बोल रहे हैं एयर है। पता नहीं एयर कैसे आया। राखी सिंह अननोन, मेगा सिंह, मार्बल सर लाइमस्टोन है, मार्बल है, मार्बल ही होगा उसके अंदर, और क्या है?
बट सम ऑफ यू आर थिंकिंग चोको लावा. यस, अभी तुमने ताजा ताजा जो है गर्लफ्रेंड को पिज्जा खिलाया, उसमें चोको लावा केक लिया, थिंकिंग मार्बल है सर, उसमें से निकलेगा केक, वो उसमें चॉकलेट निकलने वाली. वो मार्बल का पत्थर दिया, मार्बल ही होगा ना अंदर. ट्रू और नॉट? गिव यू बिग रेड स्टोन, व्हाट डू यू थिंक? रेड स्टोन ही होगा. That's what first should come to our mind. आधे लोग, कुछ दो लोग बोलते हैं उसमें हवा होगी, ये नया लेकर आए, अंदर हवा है सर. I don't know. To me, if a stone comes, if I go to say for example मैं उत्तराखंड गया, I go to Uttarakhand and I see the river is flowing and I see a big rock. So I go and step into the river, उस big rock पे मैं बैठता हूँ, I sit on that rock and I go like this, photo खिंचवा. Have you done that? When you're sitting on the rock, do you ever wonder उसमें से चॉकलेट निकलेगी, अंदर हवा है? अरे that's a stone, अंदर भी स्टोन होगा. True or not? पता नहीं कुछ लोगों को हवा लगी, कैसे ख्याल आया मुझे पता नहीं. आध्यात्मिक लोग हैं, अंदर से पहचान जाते हैं, कवर देख के बता देते हैं अंदर क्या है. So there are people with that. So I am not that evolved. छोटी सी सोच है मेरी, मैंने देखा यार पत्थर है तो अंदर भी पत्थर ही. So the first thing that humans thought was, Earth is made up of stone. Inside will be stone. Inside will be stone. First was that Earth is made up of a rock. So Earth is a rock. Earth is a piece of rock. Get that? But the problem was that we saw a volcano and we saw something fluid coming out. So that made us question that how can liquid come out of this volcano if everything is solid? So ये जो हमारा एक monolith की जो idea था, initial idea was that Earth is a mono single rock. तो उसको चेक करना था, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये अर्थ है, इधर से चेक करते हैं और इधर निकल आएंगे. ठीक है, that was our intention. तो उसके लिए क्या करेंगे? We will go dig, माइनिंग कर लो. तो पहला आइडिया क्या, पहला सोर्स है माइनिंग. कब तक करेंगे? जब तक उधर से निकल नहीं आते. मेक सेंस? ट्रू और नॉट? इसमें लंबा है, मतलब अर्थ इज ह्यूज, बट वी विल गो ऑन द अदर साइड. विल इट बी एन एडवेंचर आल्सो? इट विल बी एन एडवेंचर आल्सो. ट्रू. So I don't know. I did not read geography. I did not read geography with all that interest when I was a kid. But there was a science fiction writer, Jules Verne, and he writes a book called Journey to the Center of Earth. Journey to the Center of Earth. Before reading geography, I read this. बच्चा था, as a child. So what they did was, उन्होंने ऐसे टनल किया और फिर वो चले गए थे और फिर उधर निकल भी आए. तो मूवी भी है इसमें, I don't know मूवी है नहीं है. But they went and they found, you know, strange kingdoms in that. अंदर बहुत सारी चीजें मिली, इधर उधर सब कुछ है. फिर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, and all that caves, coves, करके निकल आए. I really like that. So I really thought, you know, we can go inside. We can go inside. And I was actually thinking, कितना सही रहेगा ना, इधर से गए उधर को निकल कर आए तो it'll be fun. So no ticket, you know, like I'm sure, you know, Indians have seen, you know, many places, historic places. Have you come across caves? Caves होती है, tunnels होती हैं. इस किले में टनल है, यहाँ से राजा निकलता था, उधर निकलती थी उसकी टनल, and all those secret routes. Yes or no? That excites us. Ideas of भूल भुलैया, you know, the maze in which you can be lost. Have you heard of those things? I really thought there will be a tunnel. But then later on they tell me that it's not a tunnel. Mining has limitations. What happens? As we go inside, the temperature begins to increase. That is a problem. If the temperature increases, then we cannot mine further. So NCERT में लिखा है, निर्मैंस्क में है कुछ 13 किलोमीटर तक की माइंस. ऐसा ना, रशिया में कोला पेनिनसुला, yes, डीपेस्ट माइंस है. और भी हो सकता है, you know, there are places of internet पे देखिएगा which is the deepest mine, which is the deepest mine. I think थोड़ा और आगे चले गए. So we are into that. But then it was a limitation that it was found that the temperature as one goes inside starts increasing. So that's a problem. So the question comes, why is the temperature increasing? Why is the temperature increasing? Where is the heat coming from? दीपशिका कह रही pressure. Okay, wrong answer. सौरभ कह रहे हैं अर्थ इंटीरियर. वही तो क्वेश्चन है, where is the heat coming from? देखो राखी ध्यान दे रहे, रेसिडुअल हीट मैंने पहले भी आपको बताया था. रेसिडुअल हीट कौन सा होता है? रेसिडुअल हीट, what is that residual heat? Remember at the formation of earth formation, trapped heat, earth has not cooled completely, plus radioactive elements. ये तो बताया, मैं तो रिमाइंड करा रहा था आपको. प्राइमोर्डियल हीट, अब प्राइमोर्डियल नहीं कह रहे हैं हम, उसको रेसिडुअल हीट कह रहे हैं. डू वी गेट दैट? सो आई टॉक्ड अबाउट दिस. हीट की वजह से हम नहीं कर पाते. तो ठीक है, परफेक्ट. So now it so happens that do we study, if you want to know about dinosaurs, do we study their fossils or not? We study their fossils. True. So अगर हम, if we want to study about Earth's interior and we cannot go inside, if a small replica of that time is available to us, can it give us a hint or not? So we see certain things, extraterrestrial objects coming and hitting the Earth's surface. Meteorite सुना है आपने? Meteorite, when they hit the Earth's surface. So that's a fragment which has come from the space and come on the Earth. उसको ले लो. Will it tell everything about it or not? पूर्वी meteor तब तक होते जब वो enter कर रहे होते, जब वो नीचे आ जाते तब वो meteorite कहलाते हैं, when they survive. So can they give us a hint into
material that formed solar system. True or not? सोलर सिस्टम भी कर सकता है. तो मीटेरोराइट लिया एंड उसका सैंपल लिया एंड वी गेट टू नो, उसको तोड़ दिया बीच में से, ड्रिल करके, छोटा सा है, छोटा है, उसमें होल कर लिया. वी फाइंड आउट दैट आल्सो. We found out that also some of them we observed. But the fact is, the meteorite is not as big as Earth. Number one, did it have the trapped heat or not? That is also there. So it may tell us, what all elements were there in the solar system at that time. But what is Earth's interior? That may not be told. So direct method is what we want to do, but usse result nahi aa raha. Third is simple: take a sample of the lava and the magma. So volcanic eruptions, volcanoes come out. Volcanic eruption has happened. Get that? And what has happened? The molten rocks, which are called magma, they come out as lava. Magma जब तक अंदर होता है, बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है. लावा का सैंपल ले लो, you'll get to know what is inside the earth. True or not? Perfect. Problem is, वो लावा कहाँ से आया? L1, L2, L3. Where did the lava come from? Do I know where did it come from? So how can I tell you which part of the earth is it representing? Deep inside the earth or the surface? Yes, it can again tell me about what are the elements, what are the material of which the earth's interior is composed of. उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाएगा. True or not? Then we resorted to something called as indirect methods. And in this, you've been told about seismic waves. Seismic waves have given us answers to, or a hint, or a very, very clear understanding that Earth's interior is layered interior. आज हम seismic waves की बात कर रहे हैं. Do you get that? Seismic waves. So the topic is called Earth's interior. We are talking about that. What is the structure of Earth? Earth's structure is layered. कैसे पता चला? डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेस से. अभी हम किस पर आ गए हैं? Indirect source, seismic waves. Is everyone with me? I'm going to talk about seismic waves. This is what my intention is to do right now. क्या क्या है ये सब चीजें? ये सब तो हमने किया नहीं आज. ओके, देखते हैं कल की क्लास में होगा. So what are seismic waves? I'm starting this topic. Pay attention to it. Whatever I'm doing, keep drawing. If you have questions, all those questions and answers will be clear. But stay focused on what I'm talking about. This is the Earth's surface. Earth's surface. It is believed that when rocks in the lithosphere move abruptly, they release energy. And that energy sends vibrations. That release of energy is called a earthquake. Release of lithospheric rocks. Why does it happen? For multiple reasons. It can happen. We will have a class on earthquakes itself. But I'm talking about simple seismic wave. So sudden release of energy in the lithospheric rocks is called an earthquake. Is everyone okay? Place where the energy is released. Suppose energy is released here. This is called the focus of earthquake. I hope you are drawing the diagram. Focus. इसी को बोलते हैं हाइपोसेंटर भी बोला जाता है. Hypocenter. Now this energy will radiate out of the focus. In all directions and reach the surface. Get that? The place where it reaches the earliest, because it is closest to the hypocenter, that place is called epicenter. Okay? This is the surface of Earth. Here it is, and the energy goes up and it hits. Inside it hits the surface. It will hit all directions, but the closest and vertically above the focus is called epicenter. Is everyone okay? Somewhere deep inside the energy is released. Now tell me everyone, if this my second hand is the surface and this one comes and hits, will the surface also be impacted or not? Can it move or not? So when the surface is impacted, it will start generating its effect in all directions. So surface पर भी effect आएगा कि नहीं आएगा? True. पहले तो inside है. So these are called body waves. Whatever is inside is called body waves. Whatever is on the surface is called surface waves. And what are waves? Energy is being sent out in form of waves. How do we get to know it? We get to know it through a device.
device sensitive to vibrations. A device sensitive to vibrations, and that device is called seismograph. Is everyone okay with this? What is a focus? What is an epicenter? What are body waves? What are surface waves? Body waves come from Earth's interior. They hit the surface. Surface also generates. And I'm not talking about many things on earthquake today. I'm just talking about seismic waves, which tells us the interior, Earth's interior. ये दोनों की दोनों जो है surface and body waves together, they are called seismic waves. Today I am interested in talking about body waves. Is everyone okay? So where do the body waves start from? They start from the focus. Where do we observe them? On the seismograph. Where is seismograph placed on the surface of Earth? Where is it placed? Where is the seismograph placed? On the surface of Earth. Where on the surface of Earth? ठीक है, किसी ने कहा नियर बाय और समथिंग, इफेक्टेड एरिया, एपीसेंटर. सिर्फ यश का आंसर सही है, एवरीवेयर. गौरी का 105 आ गया. हे राम गौरी, मतलब मुझे पता है आपने कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसे डराओ मत. डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही कंट्री की. इफ यू आर बुरुंडी, ये उसे बाढ़ में गया, सीजमिक वेव आया देखेगा नहीं. वो देखो सुजीत कह रहा अबाउट 100 मीटर, कहीं लगा दो जहां लगाना है. मंदिर कहाँ बनेगा? जहां मर्जी बना भाई. कह रहा है एपी सेंटर पे पड़ा, कहीं पे भी हो सकता है यार. इट इज जस्ट रिकॉर्डेड. नो, अच्छा एक बात बताओ, थर्मोमीटर कहाँ पे अभी इंडिया में? हर घर में है, कहीं भी हो सकता है. ये थोड़ी कि थर्मोमीटर तो वहां जहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेशन. किसी ने 105 भी बता दिया यार, तो डराए मत करो, है ना. डू वी अंडरस्टैंड नाउ? वन इज नोइंग ज्योग्राफी थ्योरेटिकली, बास्केट ऑफ एग्स, एंड 104, एंड अदर इज रियलिटी. सिंपल है ना. चलिए, तो अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? आई एम इंटरेस्टेड इन बॉडी वेव्स. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बॉडी वेव्स. Originate from focus, received at observation center, on surface. उनकी बात हो रही. So it was found कि when an earthquake comes, after that a wave is received on the seismograph. So seismograph is nothing but a device where the paper is rolled over two rollers and the paper is मूविंग ऑन दैट. ठीक है, और यहां पर हमने एक पेन लगा रखा है. एनी वाइब्रेशन इन द पेन, व्हाट हैपेंस? दैट मींस कुछ समथिंग वाज वाइब्रेटिंग, अदरवाइज द ग्राफ स्टेज लाइक दैट. मोमेंट एन अर्थक्वेक कम्स, वी फाइंड दैट दिस इज देयर, एंड दीज वर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स. It was seen that after primary waves, after some time another wave comes. Whenever the earthquake is there, first a wave comes and then another wave of different character comes. They decided to call it S waves or secondary waves. Is everyone okay? True. So wherever earthquake comes, the seismographs on the earth receive two waves. The one which comes first in short time is called primary wave. The one which comes later is called secondary wave. Now I want to tell you, the scientists studied their properties, they compared them, and they found these properties about these two waves. P wave and S wave are both energy. Can I say that? They are both energy. So P wave comes first to arrive, therefore faster. Yes. Follows P wave, arrives later, so slower. Is everyone okay with that? With me on this? Both are generated at focus. Both are this, but the speed is different. Is everyone okay with this? P wave is a longitudinal wave. S wave is a transverse wave. Now people who know something about the wave motion, wave दो प्रकार की होती है. एक wave तो ऐसे चलती है. This is transverse wave. Okay that? And this is, ये कैसे चलती है? Compression and rarefaction. और ये कैसे चलती है? Crest and trough. So it goes like this, and that one goes like this. ठीक है? Compression and rarefaction.
So everyone, your brother, sister, or friend has a rope, one end, and you also have a rope of one end, and you give a jerk like this. So what happens to the rope? Does it go like this or not? Both of you are holding the rope. It's a closed way. Okay? You just shake it. So can you see that disturbance is carried like this? Perfect. Now, say for example, have you seen closely a speaker? When a speaker is giving out sound, so the speaker vibrates like this. ऐसा देखा? ये सब आगे पीछे होता है. Speaker is vibrating. तो उसमें क्या हो रहा है? आप उसी डायरेक्शन में थोड़ा expansion contraction that is happening in the direction of the propagation of the wave. So wave किधर जा रहा है? Wave इस direction में जा रहा है. Wave propagation is there, but what is happening to the particle? Particle goes up, down, up, down, up, down. So particle is oscillating. Particle is oscillating perpendicular to the direction, और इसमें क्या है? Oscillating parallel to the direction of propagation. Is everyone okay? So एक बार आज वीडियो देखेंगे of these two waves देखेंगे. ये मैं भी ग्रुप पे डाल दूंगा ताकि आप समझ सके ये क्या होता है. This got nothing to do with geography. This has got nothing to do with geography. This is just the science of waves. दो तरह की waves होती हैं, तो ये दोनों सेम नहीं. सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सेम नहीं. So everyone, do you know the visible light that we get from the sun? Apart from that, there is ultraviolet rays also, infrared rays also. ये सब होती है नहीं होती? सन में सिर्फ व्हाइट लाइट नहीं होती, अल्ट्रावायलेट, यस, एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव होती है. दिखती तो नहीं, you can't see it, but does that mean that they are not there? No, so those are there. So can I say both of them are called waves? Both of them are called waves, but one of them is what? One of them is transverse in nature, other is longitudinal in nature. So दोनों अलग है. तो पहला तो ये समझना है is whenever an earthquake comes, there is a series of waves that come, series of waves that are felt, and the first wave that we receive, that first wave is called P wave. Is everyone with me on this or not? P wave तक क्लियर हो गए सब लोग? चलिए, P और S wave, okay. अब इसके साइंस में नहीं जाते, इसके ज्योग्राफी में. We need to go into the geography of this. Because of their different nature, their properties are different. They have different properties. तो अभी क्या किया हमने? तो प्रॉपर्टीज ही लिखा था हमने, ये इनका नेचर and properties. So nature is that this is longitudinal wave, first to come. This is second to come and transverse. अच्छा, एक earthquake से फिर वो होता है ना, आपके क्वेश्चन सुन के I get to know that many of you are not able to visualize. How can one earthquake give multiple waves? One earthquake, how can it give multiple waves? कई S waves आती. How can it give multiple waves? Quickly, everyone can think of it. Due to propagation, aftershock, change in medium, intensity, vibration. Okay, everyone. I'm not interested in whatever you're saying that. Medium change or whatever. एक ईंट लो, take a brick and throw it in a pond. What will happen? A readjustment अपने पास रखो, अमन. Ripples will be created. One brick, one ripple, or one brick, multiple ripples. So many ripples. ठीक है, कोई change in medium तो नहीं हो रहा, कोई डेंसिटी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा. तो एक बार जब आप करते हो तो वो डिस्टर्बेंस हुआ, उसके वेव्स आए. एंड डू यू नो द फर्स्ट रिपल इज द बिगेस्ट? उसके पीछे छोटू आते हैं, नहीं आते हैं. सो दैट इज वेव मोशन फॉर यू. सो ये जो इतने सारे आते हैं, चेंज इन मीडियम हो रहा है सर, कंप्रेशन हो रहा है, आई डोंट नो दैट मच फिजिक्स. उसके लिए फिजिक्स के पीएचडी टीचर बैठे हैं जो कहेंगे और किसी टीचर को नहीं आता. मैं बताता हूं आपको कितनी आएगी. अंदर जितना सोचेगा, टाइम वेस्ट करने का कर लो. सिंपल ये नहीं समझ में आता कि भैया फेंकोगे पत्थर तो a battery of waves will come. We cannot relate to it. Is everyone okay? True. कल्पना कहेगी ग्रेविटी इज नॉट सेम. भैया तुम ज्यादा जान रहे हो, ग्रेविटी इज नॉट सेम. मुझे नहीं पता, मेरा बॉडी है, मेरे हाथ पे भी उतनी लग रही है, मेरे पे भी उतनी लग रही है. ठीक है, सो ग्रेविटी बहुत सेम नहीं है, मुझे नहीं पता. मैंने तो सुना ये भी है कि एकता कपूर भी वेव बनाती है, थप्पड़ लगता है, थप्पड़. दैट और नॉट ग्रेविटी. मतलब इतने सारे फिजिसिस्ट बैठे हैं ना, अभी जो फिजिक्स कराऊंगा ना समझ नहीं आएगा, वो कर नहीं पाएंगे, बट मुझे कंप्रेशन और ये बता देंगे. इंजीनियरिंग कैसे निकाली वो पता नहीं, और यहाँ के फंडा दे रहे हैं. सबकी केमिस्ट्री फिजिक्स मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ. अभी आया था 104, कहाँ पे लगाया? 104 पे लगा हुआ है. सो फंडा में लेने नहीं वाला हूँ, अगर देने वाले हो तुम लोग तो. ग्रेविटी अलग है, और जो मास्टर दे रहा है उससे ले लो. फिर बहुतों की गुफा है भाई, फिर पीएचडी कर लो कि वहां पर क्या है, और फिर वो वही रिमेंबर, सिर्फ मुझे तो आता है, बाकी किसी को आता नहीं. हाँ मैं तुमको बताऊँ इसमें टेंशनल स्ट्रेंथ कितनी. अबे यार एक अंडा बना के कह रहा है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, व्हेन द स्टूडेंट इज दिस, उसको मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ. पगला गए हो क्या? सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड. लिख लो, जल्दी से छाप लो नोट्स वाले. मैंने कहा ना, इंप्रेस तो करने का कोई मतलब ही नहीं है. व्हेन आई नो दैट द स्टूडेंट्स आर बिगिनर्स, ईच डालो और देयर इज अ रिपल ऑफ दैट. साउंड की भी वेव्स होती है, ऐसे ट्रैवल करती है. एनीवेज, साउंड से मुझे याद आया, द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर, साउंड वेव्स
are an example of longitudinal. Remember, speaker transverse क्या है? Light waves और EM waves are an example. ये नहीं है कि सर P वेव में आवाज आती है और S वेव में लाइट आ जाती है. S वेव तो चमकता है. कुछ लोग ये भी ले लेते हैं. वो पढ़ के आते दूसरे टीचर से, अच्छा उसने बताया था सर लॉन्गिट्यूडनल तो साउंड होती है सर, पहले में तो आवाज आती है धरती पे आवाज, हेलो हेलो अर्थक्वेक अर्थक्वेक अर्थक्वेक. दूसरे में से देखना एकदम सब ब्राइट आता है. कहीं ने वो भी बना रखा है. इमेजिनेशन शून्य लोग जिनको फिजिक्स ज्यादा आता है उनके लिए. A very simple thing, it is a vibration, but yes, primary waves are longitudinal in nature and secondary waves are transverse in nature. चलिए, तो पहला क्या है? Both are generated at, please write this down, are generated at focus. Second, ये simple है, कोई ऐसा न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं. P waves travel faster. P waves travel faster than S waves. Third, both P and S waves can travel through solids. Fourth, only P wave can travel through liquids. लिक्विड में से कौन ट्रैवल कर सकता है? ओनली पी वेव. ठीक है. फिफ्थ वन, P wave, which can travel both liquid and solid, travels faster in solids than liquids. P and S waves both bend or deviate from straight path when the density of medium changes. Both P and S wave bend or deviate. सर ये लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है. चलिए काम आएगा. तुम तो ऐसे कहते हो जैसे काम की चीजें करते हो. Examine seismic waves and their nature. ये क्वेश्चन है, उसका आंसर बताया, लिख लेते तो अच्छी बात है. ठीक है. Many people will not write. मैं भी लिखूं, मैं तो पीस दिए लिखेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लूंगा. तुम एग्जाम के लिए थोड़ी बैठे हो, शनिवार के लिए बैठे हो. आई एम तो स्टिल सेइंग यार, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? ये बेंडिंग क्या होती है? मैंने स्कूल में सिखाया था कि व्हेन यू हैव लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस एंड इट बाउंसेस बैक फ्रॉम अ मिरर, ये बताया था कि ये होता है रिफ्लेक्शन. और एक बताया था कि अगर ग्लास में से अगर लाइट को पास करोगे, इफ यू पास लाइट फ्रॉम ग्लास इट बेंड्स, इसको बताया था रिफ्रैक्शन. आई होप व्हेन द मीडियम चेंजेस, यस सर मीडियम है ना, दिस इज ग्लास, दिस इज मिरर से तो बाउंस बैक कर जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन. एंड व्हेन द मिरर चेंजेस, व्हाट इज इट? रिफ्लेक्शन. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है. One is examine the seismic waves in their nature, and the second can be examine the role of seismic waves in understanding the Earth's interior. वो दूसरा क्वेश्चन है, वो थोड़ा टफ है, तो उसकी अब हम बात करने वाले हैं. ठीक है everyone? So we don't know what's inside the Earth. We are assuming that Earth is a monolith. Is everyone okay with the word monolith? Monolith क्या होता है? Monolith हमें पता है. ठीक है. अब मैंने अर्थ बना दिया. Please make an Earth. अर्थ पर मैंने क्या किया हुआ? I have established seismic stations. 10 seismic stations are there, assuming. And I see an earthquake comes. Earthquake will send out vibrations. In which directions? In all directions. Yes or no? So which seismic station should receive the seismic waves? Which seismic station? So all of them should receive, but at different times. Why different times? So wave will take time to reach the distance. So which one will receive the first? So the one which is closest, epicenter. Yes or no? Epicenter. Which wave will strike the epicenter first? P. Which wave will strike the epicenter second? S. So P or S आ जाएगा. So S1 will also receive at T1. ये T2 पर आएगा, T3 पर आएगा. All of them are supposed to receive seismic waves. Yes or no?
The only thing is, what will be different? Time will be different. Is everyone with me? So the earthquake has come. We give a call to the fellow at S1 and we ask him, भाई कैसा है? Earthquake आया क्या? हाँ बिल्कुल आया यार. Yes. S2 fellow, earthquake आया क्या? हाँ. Yes. Do we get that? अभी clear? Earthquake आया? हाँ आया. S4 earthquake आया? कौन सा earthquake? No earthquake. अपना डिवाइस सही करो. किस लिए पैसा देते हैं? चेंज योर डिवाइस. दुनिया में earthquake आया तुमको नहीं दिखाई दे रहा है. ओके. S5 आया earthquake? हाँ सर आया. P आ चुका है. S का वेट कर रहे हैं. क्या बात कर रहा है? S तो आ गया? नहीं सर सिर्फ P आया. डिवाइस चेंज करो. P S8 कुछ नहीं आया. इसके बाद फिर आ गया PS. What is it? This is just empirical observations that are done. अभी तक कुछ interpretation नहीं है. This is the reality. Is everyone okay? This is the reality. And what would you say? S4 and S8 have some problem with their seismograph. S5, 6, 7 also need to buy a new seismograph. That is what the world is thinking. But now we started thinking more. And we found that all stations, all seismographs, which were, suppose this is everyone, if I divide Earth into 360 degrees, if I divide Earth into 360 degrees, can I say point P is, or point Z? Z is at what angle? 90 degrees or not? Yes. Can I say this will be 100? So from 104 degrees to 143 degrees. How much? 143 degrees. अब 104 से 105 भी हो सकता है, 103 भी हो सकता है, to 141 भी हो सकता है. This sector, nothing comes. In this sector, it was found that P and S never come. Now, where is this angle being measured from, everyone? Where is this angle being measured from? Everyone? Where is this angle being measured from? यहाँ पे रखा हूँ ऐसे को. देखो from the center. अरे from the focus. Center से क्यों कर भाई? Focus की line से at the center. I'm not saying where at the center ये. ठीक है? किसी ने at epicenter नहीं है. Focus से कितना हुआ है? तो focus से जो angle ये जो line आ रही है, focus वाली line उससे कितना? Is everyone okay? Now came the question: how is it that the waves are not reaching? P and S are not reaching. In fact, it was found that from this 104 onwards, no S waves comes. No S wave. S wave does not get received after this. Everyone okay with this? That means this is the last wave from the epicenter, which is S. So here we will receive S, here you will receive S, here you will receive S, but उसके आगे S wave नहीं जाता है. So what can stop S wave? Quickly, what can stop S wave? So only liquid can stop S wave. That means there must be a liquid layer. There must be a liquid layer somewhere inside the earth, which is actually stopping the S waves to be received. Everyone, do we get that? So indirectly, the S waves not reaching after an angle tells us that Earth is not a monolith. Can I say that? Earth has a liquid layer in the center. Is everyone okay? Now, can we explain a liquid layer? Oh yes, we can. Earth's interior is very, very hot. Residual heat, as well as what? Residual heat and radioactivity. Because of that, rocks which are very, very pressurized are molten. Pressurized rock भी, but heat इतनी ज़्यादा है कि वो melt हो गए तो liquid है. Everyone, do we get that? What happened to S waves? Why are they not coming? S waves are reflected after this. They cannot cross. Is everyone okay? Now comes the question that this 143, 145, whatever is there, इसके बाद P wave कहाँ से आ जाती है? How did the P wave come? S wave, to everyone understood, is blocked. Why is the P wave coming? So remember, P wave can cross. P wave तो आ सकती है. P wave too can pass through both the mediums. Why is the P wave not coming? We found that in this neither P nor S. So P wave should have come. So now comes the thing that when you are coming from solid to liquid, is the density of the medium changing? So should a P wave which is coming here, should a P wave bend?
bend or not? Will it bend? Can I say another time that medium has changed? Will it bend again? And it appears here. So P waves are coming, no doubt about that, but they are getting bent. Because of bending, there are certain regions which will not get P also. Yes or no? The regions which are not going to get the seismic waves will be called as shadow regions. 105 to 143 degrees is P and S shadow. 105 to 105 degrees is S shadow. Do we get that? S complete में चला गया और इसमें एक special zone है which is only P and S. This one is for P and S. Everyone, did we understand this or not? पहले मुझे इसका confirmation दो. ये सर ये तो समझ आ गया. No problem. Clear? Is it established that Earth has a layer here also? So Earth is layered. Earth has a solid exterior, and inside what is it? Inside it is molten. Why is it molten? Because it is heat. And what is happening to P waves? P waves are traveling, no doubt about that, but they did not travel in the ideal straight path. In fact, they got deviated. As a result, they could not reach that shadow zone. Everyone okay? Did knowing the properties help us or not? Okay. Now, everyone, please tell me one thing. If you know the distance, to be traveled, if you know the speed at which you are moving, can you tell me the time or not? Yes. A trained geologist who knows the speed of the seismic wave, both P and S, he knows what is the speed of P, what is the speed of S, and who knows the distance from the foci, can he tell us the time at which the P and S wave or only P wave is expected? Can he tell us the time in advance or not? Yes or no? सोच के बताना. अगर आपको डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता, क्या आप टाइम बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हैं. So first of all, we explained where P comes, where S comes, and now we are to the next level, T comes. So it was found that everything was okay, explained, but T5 से थोड़ा जल्दी आ गया. T5 माइनस आया. T6 पे भी थोड़ा सा जल्दी आ गया, earlier than expected. T7 माइनस. तो इसमें जब भी आया, ये जो टाइम था ना, the waves were reaching earlier. पहले तो बताओ which wave will reach here? P or S or both? Okay, only P will come, and you know the speed, you know the deviations, everything is known, and you can find out the T, but the T was coming out. So there was a minor error in that. So what were the geologists doing? Geologists were neglecting it. They said, okay, no problem, यार छोड़ना, कुछ फर्क नहीं, थोड़ा calculation का इधर उधर error होगा. It was happening everywhere. So a geologist, when she was studying this, she felt that how is it possible that our time is coming wrong? We know all the science of it. How is it that our time is coming wrong? So she consulted. She talked to many people, many geologists, fellow geologists. They said, "हाँ time आता है, but that's an error. It's okay. We don't think it is considerable." But she was serious about it. She said, "ऐसा तो नहीं होना चाहिए." So when we are talking about faster, somewhere coming early, that means P waves have become faster. Any property that talks about P wave is faster. Point number 5. P wave travels faster in solid than liquid. This is only possible that somewhere P wave will encounter a solid medium, तभी उसकी velocity बड़ी होगी. So this woman proposed that Earth's core is not liquid alone. Earth has a dual core, which is outer is liquid and inner is solid. Do we get that? Only then can we explain that S wave came early. So first people said you are a fool. When Earth is so hot, how can Earth's center be solid? We just now explained liquid by temperature. How can you say that inside it is solid? What will you do to explain? So she said that the state of matter is changed, one by temperature, second by pressure also. No? So temperature is there. Temperature is causing it to melt. But can we through pressurization make LPG into liquid? She says the pressure of the overlying layers is so much that the melt effect of the temperature is overcome and it becomes solid. So super compression happens because of that weight, and that is why first people resisted and all those things. But remember, जब लड़की को समझ आ गया तो आ गया. वो तो तब तक नहीं मानी जब तक उसे Nobel Prize नहीं मिला. Until unless she was given a Nobel Prize. This was a very, very big find that Earth's interior
has solid first, which is mantle, then liquid outer core and solid inner core. This is the knowledge which seismic waves have given us about the Earth's interior. Is everyone clear? तो अर्थ के पास कितने लेयर हैं? क्रस्ट तो हम जानते हैं, we know crust, then mantle, then core. Now core is two, outer core and inner core. Rigid, brittle, solid, deformable, solid or liquid? Mantle क्या है? Solid or liquid? Is mantle solid or liquid? मुझे पता था कुछ लोग यहाँ पे आएंगे मध्यम मार्ग वाले, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड. अब एक बात बताओ, can S wave pass through it, through mantle? Yes or no? S wave are stopped at which boundary? Liquid, na? So can S wave pass through mantle? Yes or no? So what is mantle? जितने लोग भी नशा करके बैठे हैं जो उसे सेमी लिक्विड कह रहे हैं, क्योंकि मास्टर जी ने बताया एक्चुअली ना फ्लो कर सकता है. भाई सुनो, है तो सॉलिड. अगर लिक्विड होता तो एस वेव नहीं पास करेगी, बट डिफॉर्मेबल सॉलिड दैट इज दैट. ठीक है, तो मध्यम मार्ग वाले थोड़ा सा साइंस लगा लो, बाकी तो तुम्हें मजा तो काफी क्लासेस में आता है, तुम एंजॉय करते रहो. आउटर कोर इज liquid, inner core is solid. What is this? Dual core. Earth has a dual core. It is because of this dual core that Earth has a magnetism which is called geomagnetism, जो आज डिस्कस नहीं कर पाए, कल करेंगे. Who has given this? How did we get to know about this? Seismic waves. What is the question? Discuss the role of seismic waves in determining the structure of Earth's interior. Is everyone okay with this? Question answer हो सकता है. Will we have to talk about properties of seismic wave in this or not? Because only those properties will help us find out the Earth's interior. Yes. Will we tell them the story कि फिर ऐसा हुआ, फिर उसको लोगों ने कहा नहीं तुम बेवकूफ हो, ये वो सब तो नहीं बताएंगे. We'll straight away say that the battery or the network of seismic waves on seismometers on the Earth's surface showed differences in the receipt of P and S waves as shown in the figure. Yes. There was a shadow zone of S, there was a shadow zone of P and S. This can only be explained if one understands the properties. So S waves की फिर properties बताएंगे, and then we will make the diagram. That diagram, is everyone clear about this diagram? तो ये NCERT में दिया हुआ है. Many people don't understand this, so that is why I have brought this. Many teachers will say सिर्फ मुझे ही आता है, देखो कोई नहीं समझा सकता. It's a very simple thing. Anyone can understand. Only thing is NCERT it is not very easily understandable. So that is that. And our questions would be question number one. Examine seismic waves and their nature. Short note. Second question, discuss the role of seismic waves in determining the structure of Earth's interior. Did we understand? Some of you may have complained, sir, आधा घंटा extra क्यों लेते हो आप class? Yeah, first half an hour. Generally, I give feedback to the work that you've done. प्रियांशु बोले सर वो लेडी का नाम होगा बट प्राइस, अरे चेक कर लो ना बेटा, आपके पास गूगल है. सो जियोलॉजिस्ट, नेचर ऑफ कोर, ठीक है. So that's what we're talking about. Did we understand today? Morphogenetic regions क्या होते हैं ये मैं कल बता दूंगा. That is why I taught you climatology. Before that, this is the part of classification of regions. या नहीं करा
Sir, at the crust and mantle both are solid. How we identify them? Because medium is same, I think by deviation we get identified them. Yes, yes, you are correct. बाकी लोग का ये पूछना है कि सर क्रस्ट और मेटल में क्या अंतर होता है, कैसे पता चलता है, कल बताएंगे। कंटिन्यू अभी 3 बज गया ना, इसलिए 3 नहीं 2:30 हो गया, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये अभी हाफ डन है, इस पूरे उसको दोबारा से बताऊंगा कल विल गो इनटू डिटेल इंटीरियर। इज एवरीवन सो दैट डायग्राम इज देयर। So everyone, can we practice this diagram today? From NCERT, can we practice this diagram अपने diagram book में? समझ में आ गया इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि नहीं है? सो अर्थ इंटीरियर वहां पे बनाना मुश्किल होता है, दैट इज व्हाई आई सेड दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विच डायग्राम आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू मेक ये वाला। यहीं से निकल जाएगा। Please have a look at this graph or cycle of erosion graph and cycle of erosion. Can we do that? बनाना है इनको। बना के अपने डायग्राम बुक में। आई सेड पीपल हु आर इन माय क्लासेस I progressively give them tools, questions, everything that is there. Whatever you know, if there is something wrong, that will be corrected. Please be receptive to that. मुझसे लड़ो मत, I am on your side. Please don't fight with me. I will question you. कुछ errors होगा, I will be bring
Hi all, if you are still logged in, some issue with the power cut. So thank you. Would like to formally end the class, and rest all will be put on the group. So you can do your diagram homework, the graph homework, and the slides will also be there. So you can download them. So that is there. Thank you. Take care. I'll see you tomorrow.